There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy... The scribe's work is simple, which is exactly why I took the position. Wait. Huh? You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Next on the agenda... No touching! Born of ice and frost. No touching. We're way behind schedule. Next on the agenda... Hello, okhdfcbank bro. Welcome. चल रहा है Genshin हो गया. Next on the agenda... वीकली नहीं, अभी नहीं है वीकली. मैं तो अभी करूँगा, अभी तो कमीशन से कर रहा हूँ. कमीशंस हो जाएंगे फिर वीकली करूँगा. Next on the agenda...
अब कहाँ है कमीशन वगैरह? अरे बात करने वाला कमीशन है। क्या चीज? ये क्या था मतलब? It's so nice to de-stress. अब तेज दौड़ ले भाई। चला जाऊं पहले, लड़ाई वड़ाई हो जाए। There have been many poorly written applications lately. I guess I'll just have to reject them all. चला गया ये लास्ट तक मशीन। Add as. Thank you for. Add as. बाकी चल नहीं, बायजू तो कल आएगा ना, कल दोपहर में आएगा वो। कल दोपहर में मतलब मुझे तो निकालना नहीं है बायजू, मुझे उसके एबिलिटीज कुछ खास पसंद नहीं है। और मल्टीप्लेयर्स उसके पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। तो अभी तो वैसे सेव कर रहा हूँ विशेष, शायद मुझे यूएमिया पे करना पड़ सकता है अगर यूएमिया आती है तो, क्योंकि मेरे पास वो कम है वो स्टारडस्ट वाले जो वीकली 5 मिलता है ना, वो फिर हो नहीं पाएंगे मेरा। कावे मेरे को अच्छा लगा, कावे की एबिलिटीज अच्छी हैं, 4 स्टार है, अच्छे एबिलिटीज हैं। नहीं मैं टीसीजे का नहीं कर रहा, मैं टीसीजे वैसे ही नहीं कर रहा था, उसमें प्रीमो रिमो मिल रहा होता तो मैं करता, लेकिन वो बस ऐसे ही है समझ लो, ले लाइंस है बस, वो उसमें टीसीजी में है। What did you find out? Well,
Lots of unexpected details, let's put it that way. The mercs themselves were surprisingly easy to catch. We just had someone dress up as Sachin and they took the bait. But then it starts to get messy. During the interrogation, we learned that they were hired by Sachin's own child. What? Why would someone want to kidnap their own father? What's up with that? It's anybody's guess at this point. In any event, apparently the guys we caught are just the tip of the iceberg. Most of them are still snooping around outside the city. We're diverting manpower as we speak to try and round them all up. Would you like to come along? Sure, let's go get to the bottom of all this. हाँ टीवी में मजा नहीं आता वो। Quit following me. Card game. Snake game. Behold! ये कौन मरे पड़े हैं भाई सब? Are you sure this is the right place? Something feels off. I'm positive. But I don't understand why they're all unconscious on the ground. Boss, we got more company. Look, we were just doing what we were paid to do. You're punishing the wrong people here. You want the real culprit? It's this guy. He hired us to kidnap Sachin. What happened? Who beat you all up? Wait, you mean you aren't with them? With who? Who did this? First there was this flying brat. Didn't bother asking any questions, just started throwing punches. After that, some guy wearing green came along and interrogated us for a bit. I've got the confirmation I needed. This is the one who masterminded this whole plot. Jawani, Sachin's son. If you have any questions for him, now's your chance to ask them. When you're done, I'm arresting them all and taking them back to the academia for further interrogation. So why did you hire people to kidnap Sachin? What do you think? 20 years ago, he upped and left to go and live a carefree life, not giving a second thought for my welfare. As if that's not bad enough already, he went and put his entire fortune in the care of the academia, along with a contract saying that one day he'd pass it all on to a genius he admired. That's my inheritance, by rights. You expect me to sit back and watch it go to someone else? If he won't give me what's mine, I'll just have to take it from him. Of course! Didn't he say he would be here somewhere, watching the championship from the shadows? So, I figured I'd get some people to nab him. Then I make him change the contract. And if the academia doesn't agree to hand over the goods, I make him publicly announce that I'm his chosen genius. No, the old fart knows how to stay hidden. I'll give him that. He's probably cooped up somewhere watching all this go on and laughing to himself. I already thought he'd gone mad 20 years ago. And who knows what a madman's truly capable of. Diadem of knowledge? You mean that thing he donated to the academia? Well, I can tell you that it's very expensive. He sold a lot of assets to purchase it back in the day. Weird things started happening after he brought it home, too. For example, sometimes we'd hear a high-pitched voice coming from the storage room. Also, before donating it to the academia, he once shut himself in that same storeroom and researched it non-stop for days. Something was already seriously wrong with him by that point. Nothing he did shocked me. What do you mean, something wrong with him? I only have a vague memory of it, since I was very young at the time. But I have the impression that he went out into the desert for research and didn't return for many ग्रीन मेरे ख्याल years. से अलहतम When he होगा finally did return, और he was उड़ने a वाला गाय changed बोल रहा था person. वो शायद वो He would स्कैरामुश mumble incomprehensibly and write essays day and night. मेरे मतलब मेरे I asked if I could see what he'd written, स्टोरी का पता चलेगा but he chased me out of the room. Later, he went out somewhere and took his written essays with him. When he got back, he signed his contract with the academia. Part of me wonders whether he'd already stopped being my father by that point. Perhaps the man we called Sachin was a demon from the desert who was wearing his skin. Okay,
You can believe me or not. Doesn't matter to me. I told you all I know. But if you do see Sachin, tell him this for me. Whatever it is that he's researching out there, he'll always be garbage in my eyes. You finished? In that case, come with us. Well, we finally caught the guy behind all this. Thanks for providing us with the critical information. Do you still have any lingering concerns? Yeah! Al-Haytham's notes do mention that item. Scribe Al-Haytham looked into this matter. Understood. Well, if you believe there to be an issue with the diadem, I'd suggest contacting the organizers and getting them to pause the competitions while we investigate. That makes sense. Okay then, let's get back to the venue. We need to tell Karina what's going on. Karina! You're finally back. Where have you been? I looked everywhere for you. The third round's already started. We were out capturing some bad guys who wanted to kidnap Sachin. But that's not important right now. We think there might be something wrong with the Diadem of Knowledge, and we'd like to investigate it. The diadem? That seems unlikely. The Diadem of Knowledge has been used in every extravaganza over the last 2 decades, always without incident. Why has this come up now? This is pretty serious. Let me think. Okay, here's the situation. The diadem is currently in Mount Ima Forest. We moved it there before the third round began. In the third round, contestants have to go into Mount Ima Forest, find the diadem, bring it back, and place it on the stand. The first person to do this gets 4 points. Considering how close the scores are between our contestants, whoever wins this round is very likely to be the winner of the whole competition. As such, I suspect competition to be very fierce. You might not make it in time. I'll mark the diadem's location for you. Please head there immediately. Let's hope nothing happens. All right, let's go. That's weird. The locator stopped working. Is the forest interfering with it? Ugh. Let's just go grab the diadem. Uh-oh. This place looks empty. Did someone already take... The wind rises. Oh, looks like Layla has seized the diadem. But getting to the goal won't be easy. That guy enters the fray. Horizon's device has gone haywire. The competition is heating up. Oh. And here's Kaveh bringing up the rear.
Kaveh's toolbox! Throwing the diadem to its owner! Yes, that's right. आवाज नहीं Put the आवाज आ रही है, बहुत diadem in कम आ रही है. place, and you shall gain all you desire. हेलो आ रही है. Who are आ you? रही है. I need you to get out of my कल रात head. को थे क्या I वीसी पे? am confident कल रात को थे that क्या you वीसी will not disappoint क्या हुआ me. वैसे में कल रात को? What just happened to me? हमारा इसका का युद्ध. ओह, Something's wrong. क्षमा पता नहीं क्या एकदम बोले जा रहा है और हम निकालते हैं 4 लोग खेल लेते फिर वो एकदम नहीं आपको भी बोल रहा है. रुक जाओ जरा, इधर एक कटसीन चल रहा है, रुक जाओ 2 मिनट. हमारी आवाज भी बहुत कम आ रही है. बढ़ा लेना वहाँ से. At long last, someone to inherit my estate, and with it, my research. Come, Kaveh. Come to me, my child. How do you know my name? Who are you? I am Sachin. Well, to be precise, I am but a fragment of Sachin's mind. Fate is a curious thing. Seeing you reminds me of another I once met. But you are made of sterner stuff than he, more cognizant of the trials and tribulations of this world. It is you who are worthy to inherit all that I once owned. We meet for the first time, children. But what I mean to say now is of utmost importance. So please, pay attention and bear witness. You have all performed outstandingly in this Interdashon Championship. The Academia has many rare talents among its ranks, and you are the creme of the creme. But if I were to choose a successor, I would choose you, Kaveh. Not only because you were victorious, but also due to our similarities in character. Me? Similar to you? Why, yes. Both of us have the misfortune to be idealists, and that is the source of our misery. 28 years ago, I came to the desert and lived there for 8 full उन लोगों years. का आइडिया ही नहीं मेरा What do you Genshin think I अकाउंट saw है there? करके अभी तक तो. Alas, endless strife and slaughter. Conflict over water sources. Robbing of merchant caravans. Exploitation of the people relentlessly, day after day. Beyond the wall of Samiel lay a completely different world from the one I knew. The things I witnessed there tormented me greatly. I wished desperately to find a way to save them. So, did you find a way? As a Vahumana scholar, I tried to use Vahumana knowledge to find the answer. I researched history and anthropology, performed countless experiments on human nature, and even sought out the scholars living deep in the desert who called themselves the Lost Darshan. But in the end, I found that the answer I sought simply did not exist. It was not possible to simply assign blame for these transgressions to any one party, for the sins are carved into humanity's very nature. Our nature begets conflict, and conflict begets destruction. This is the inexorable truth. The aim of my research was to draw lessons from history. But what I discovered was that history offers no such guidance. Things can only ever go from bad to worse. After this realization, I could no longer see the meaning in anything that I had ever learned. Consumed by an overwhelming sense of emptiness, I could no longer bear to face life. And so, I decided to bring my life to an end. But before I went through with it, a strange twist of fate led me to come into the possession of this diadem, which has the ability to preserve part of one's consciousness. Into it, I placed my experiences before requesting that the Academia manage my estate. As I thought. The contract you signed with the Academia was in essence your will. But if you'd given up hope on this world,
Why did you feel the need to do this? I mentioned that I have performed a great many experiments concerning human nature. You may regard this as the very last experiment of them all. The academia has no shortage of genius talents, nurturing the brightest minds of every generation. And so, with a handsome reward to draw out the worthiest of individuals, my hope was that one day I would find one who could untangle the mystery of human nature once and for all, and help to move the world onto a better path. I see. So you desired a successor who was not only a genius, but who also understood the suffering of ordinary people. Such a person would have a clearer understanding of humanity, society, and the world. Huh? But did you ever consider that wealth numbs the human heart to the pain in the world? Even an idealist may be incapable of following through on your wishes after inheriting your wealth. You are highly intelligent, yet you are not the sort of person who would understand my line of thinking. To me, this is also part of the experiment. Part of my investigation into human nature. Whether my successor suffers as a consequence of my research, or succumbs to an indulgence in pleasure-seeking, my research will have progressed. I grieve the fundamental sickness of the world. I regret the unbearable weight of its history. And I lament the research that I failed to complete. And this, Kaveh, my dear child, is why you will be of great utility to me. You're absolutely certain that you want to give me everything you owned? For me to do with as I please? I have faith in what I see in you. Now wear the diadem, Kaveh, and complete the journey that I could not. Will the verdict I reached cause you suffering? Or will this newfound wealth numb your heart? I look forward to your answer. All of my research materials are being stored at Huh? I've heard enough! My life's enough of a mess already. The last thing I need is more suffering. Keep your Mora. I don't need it. Didn't you say that you saw a lot of people in pain? Well, if that's the case, then your wealth can go to them. I guess that'll be the end of that. Kaveh. Are you all right? Any physical discomfort? I'm fine. Thanks, Tainari. Don't worry about me. Don't push yourself too hard. Kaveh. Kaveh may have broken the diadem, but he successfully completed the task prior to that. According to the rules, this makes him the victor of round 3. Points-wise, this also makes him the winner of the Inter-Darshan Championship. As the champion and Sachin's personally designated successor, Kaveh has obtained the rights to inherit the entirety of his estate. For the avoidance of doubt, can you confirm that it is your intention to donate all of Sachin's wealth? Like I said, he thought that the world is a bad place. Well then, let's use what he left behind to change it for the better. Rejecting the world will achieve nothing. He and I, we're not the same. All right. As the scribe, I will make a record of this incident on file. The sages will contact you in person for details on how exactly Sachin's estate is to be used. That sounds fine. I don't know if his research findings were right, nor would I know how to finish his research for him. But what I do know is that by ending this here, no contestants will have to suffer. We won't be the last. There will be more championships to come, and countless future scholars will follow in our footsteps. Sachin's words can only cause pain, but not anymore. No one else has to hear them now. We're all scholars here. I know full well that shutting down his views like this is autocratic and arrogant. Fine by me. I'll bear that responsibility. It's the least I can do. And, well, it's the only thing I can do. Well said. What you've expressed is a sense of justice and idealism that many aspire to, but few dare follow through with.
I say this despite the fact that, in my view, it's quite ridiculous. You have long been aware of what your flaws are, but your pride alone prevents you from admitting it. Nevertheless, your perspective is well suited to appearing in a victory speech. Contestant Kaveh, on behalf of the organizing committee, it is my honor to congratulate you on your victory. What? Please. I don't need your insincere praise. Anyway, this isn't the time or place for debates. Keep your commentary focused on the competition, not my views. Congratulations, Kaveh. Also, you'll need to prepare for the award ceremony. Looks like the ceremony will be held at the main venue. Let's head... Squall and Fury. Thank you all for your excellent performance. And that brings this year's Interdarshan Championship to a close. Finally, it gives me great pleasure to invite our champion, Kaveh, to the stage to receive his award. Typically at this point, we would crown our champion with the diadem as well as presenting them with their award. However, we have just received word that Kaveh has inherited Sachin's estate and made the decision to donate it all to charitable causes. Sachin's estate is getting donated? So much, Mora. And he gave it all up? Kaveh's generosity will give many struggling families the chance to change their lives for the better. Of course, without the diadem and prize money to present, this makes the award ceremony a little more concise than expected. Would you like to say a few words, Kaveh? I'm sure many of our audience, like myself, are curious to learn why you decided to give all this wealth away. I'm not entirely sure what I should say under these circumstances. I'm glad to have won, even though I'd say luck played a big part in that. As for why I want to give the Mora away, I don't support Sachin's views, and I don't want to take his Mora. With a lot of things in life, people need to experience them for themselves. It shouldn't be up to one person to make a judgment on. Not him, and not me either. Anyway, this isn't really the time and place for such weighty and complicated topics. So, I guess that's all. I'll leave it there. Thanks very much. Oh, Kaveh, just one moment. While this is a short and sweet award ceremony, we do still have a prize to present you with. Please take this limited edition Genius Invocation TCG card. Additionally, your champion status will be logged in your record. This means that the Sages will give priority consideration to any future project proposals you submit. All right, I'll take the card. But as for project proposals, forget it. In that case, I declare the award ceremony over. Let's give our champion Kaveh one last big round of applause. I still don't really get it. The sum of Mora would have been enough for me to live in luxury for my entire life. That just means you're not strange enough to understand the way that geniuses think. Come on, we've still got the whole Wisdom Gala to explore. Glad that's over. I think I'm quite good at giving speeches, but this one was just so tiring. Do you mean that you're still exhausted from the competition? Honestly, you don't look happy at all, but whatever else happened, you're the champion, you know? Don't you think you should be proud of that? I suppose. Oh, wait. Sino said he wanted the card, didn't he? And now I have it, right here. So you're gonna give it to him? But if it's a rare one, you should be able to make a tidy sum of more off it. Why would I do that? It's of no use to me whatsoever. I may as well just give it to him. Could you pass it on to him for me when you next see him? Whoa, whoa! This is a super big deal! You should do it yourself! Come on, let's go find Sino. Huh? But I was gonna rest for a while longer. Hey, stop pulling my hair! What you looking at, Sino? I'm still thinking about the Sachin issue.
What brings you here? Well, they gave me this limited edition Genius Invocation card, and I figured you'd have more use for it than I. But it's a limited edition. Are you sure you want to give it to me? What else would I do with it? I have no use for it. But it's limited edition. Kaveh, are you in trouble? You don't have to do all this. Just tell me what's wrong and I will help. Oh, that's not what I meant at all. Yes, I have all sorts of problems, but that has absolutely nothing to do with this card. I'll figure my own issues out by myself. All right. In that case, I accept your generosity. But now that I realize that you have no concept of its value, I cannot simply take it from you. How about this? I shall buy it from you at a fair price. Namely, the price that the previous limited edition card sold for. Oh, come on. It's just one card. How much could it really be worth? 1 million more at the very least. Huh? How much? 1 million more? If you feel that's too low, I can go a little higher. 1 million mora for a card? But you already have a whole bunch of these, shiny ones, don't you? I saw your deck last time we played. Not every card is this valuable, and some cards are exquisitely designed, but not rare. Huh. Well, I guess they must pay you plenty to be General Mahamatra if you're splashing out on things like this. But really, it's fine. I'd feel bad taking mora from a friend. Don't feel bad. I save a lot. I can spare the mora for this card. You don't spend all your savings on your hobbies, do you? You should watch that, you know. You definitely don't want to end up borrowing money in a moment of impulsivity. Living with debt is miserable. Sounds like you're speaking from personal experience. I guess you've been through a lot? I don't want to talk about it. In that case, maybe you're the one who should be listening to your advice. In any case, I, Sino, will take this precious card, and it shall join the deck of destiny. Kaveh, come with me in a few moments to collect the mora. Thanks to you, I have achieved my goal for participating in this tournament. All right, if you insist. Far be it from me to refuse your courtesy any further. Well, at least I'll be able to keep on top of my bills this month. Maybe I'll even have some left over. In fact, let me treat you all to a meal later. Bring Tainari and Kale, too. Well, this is what they call all's well that ends well. Paimon wonders how the other contestants are doing. Let's go check in with them, shall we? Since we're guest commentators and all. Looking at the scores alone only... Behold! Squall Fury! I'm telling you, you can't go wrong taking advice from me on what to wear. Back in the day, my fashion style was considered cutting edge by everyone in the academia. Really? Well then, sure, Madame Farzan. Maybe you could pick out a few fashionable outfits for us. Farzan! Nilu! Even Dia and Candace are here! What are you all up to? Candace and I bumped into these two while we were strolling through the streets. Madame Farzan here's pretty friendly. When she heard that we were buying clothes, she decided to give us some help. I don't really see anything I'm familiar with. Never mind. We can purchase some textiles and make the clothes ourselves. Let's go with the plain fabric as our base. And embroider red and pink flowers on. Oh, and some green leaves. Oh, wait a sec. You sure that's the latest style? That sounds a lot like what the older folks back home would wear. Don't worry. This style is a timeless classic. No thanks. This is actually sounding pretty weird. Wait. Madame Farzan's right. That style is a classic, and used to be mainstream fashion. But these days, there's some other options too. If you don't mind, how about I pick some clothes out for everyone? It's not often that we get to meet up, especially since Candace rarely makes it to Sumeru City. Also, I know a few places where I can get a great bargain.
Sure. I'm happy to leave it to you. I'll come with you to have a look. One always has to keep on top of what the youth of today are into. Madame Farazan? Come quick! She's over here! Who are you? We're new in the academia. We saw all the amazing things you did during the competition. Do you have any classes we could sign up for? Of course I do. And you're both very welcome to join. That's great! We can't wait. What's your area of research? Precision mechanics? I'm from Haravatat. Huh? But you seem like an expert in machines. Wait, sorry. I remember now. You were representing the Haravatat Darshan in the championship. Oh, their classes are so boring, though. I'm sorry, ma'am. Let me know if you run any other classes in the future. I'll be there. I knew it. What about you? Aren't you going to leave with your friend? I think you're amazing, Madame Farazan. And I'd like to learn from you for a while, if possible. I can take the class you're teaching as an option, even though cross-Darshan lessons might be a little tough to arrange. But I look forward to learning from you. I see. You're a good egg, child. Don't worry. Study under me, and I promise you, you will get the best teaching available. Thank you so much, ma'am. Well, I won't disturb you any further. See you in class. I don't quite understand what happened there, but congratulations, I think. Traveler, Paimon, would you two like to come and pick out some clothes? Sorry, we can't. We've got a meal with Kaveh later, and we have to check in with all the other contestants before then. Oh, by the way, have any of you seen Honkai or Layla? I don't know where Hakai went. We just saw Layla not too long ago, though. But she was hanging out with some other Ratahoa students, so we didn't get a chance to speak with her. Are you gonna go and see what she's up to? Ratahoa students? They must be the ones who voted for her to enter the competition, right? Oh, she didn't end up winning, so Paimon wonders how they feel about that. Let's go take a peek. The wind rises. I'm sorry, everyone. I could have done better in the third round. Oh, stop it. If you're going to beat yourself up after doing as well as you did, how bad does that make us look, huh? Heck, it's not like any of us had the guts to enter the championship. I didn't see the whole thing, but you were the only contestant who scored points in both the first 2 rounds, right? And I heard that you actually found the diadem first in round 3. You came so close to winning the competition. I just got lucky, I think. That can't be true. You had some really stiff competition out there. The renowned Tainari from Amorta, even Sino the General Mahamatra was there. You're amazing, all of you. Getting points off them is a huge achievement. The way I see it, people aren't exaggerating one bit with the nicknames they give you. You are a genuine genius. Oh, thanks a lot. But I really don't think I qualify as a genius. In the second round, for instance, I dozed off and somehow found myself beside the device when I came to. Ah, come on, don't be so hard on yourself. We've decided we're taking you out to celebrate, and that's final. Let's go. Cheer up, Layla. The rest of today's all about you. Looks like things are going well for Layla. This is great. We haven't seen Hakai since the end of the competition. Oh well, it's almost mealtime. We'd better go meet up with Kaveh and Sino now. Squall and Fury. The wind rises.
too slow. Are you sure you have enough to cover this? Don't blow it all at once. Don't worry. I budgeted very carefully, and this is well within my means. Anyway, I've lost count of how many times you've treated me. It's high time I return the favor. Oh, Traveler, Paimon, over here! Ooh, look at all this! Good food, here we come! I heard that you went to see the other contestants. How's everyone doing? Faruzan found herself a student, and Layla's classmates are bowled over by how well she did. We couldn't find Hat Guy, though. Who knows where he's gone? Alhaitham's gone missing in action, too. Huh. The one time I'm actually in a good enough mood to treat him to a nice meal, he disappears without a trace. That guy. Where the heck could he have gone? I still have questions about that note he left. Well, whatever. He can do what he wants. Now, let's eat. You shocked me a little when you hurled the diadem to the ground. On further reflection, of course, it made sense, but at the time I was expecting at least some amount of deliberation. Sachin's voice started talking to me inside my head from the moment I picked it up. I could feel his emotions, too. It was a mix of despair and horror swirling around inside my mind. He bombarded me with his ideas relentlessly, like he was trying to brainwash me. It gave me a splitting headache that only got worse as he went on. Like I was saying at the time, his views are not necessarily completely without value. But if all his research does is lead to misfortune, then we're probably better off without it. If his forbidden research were to spread in a harmful form and cause people to suffer, the Matra would step in and ban it. I think you did the right thing. I suppose another way to approach it would have been to claim that you agreed to inherit his research, but give up the research as soon as you've inherited the wealth. But that wouldn't have been your style. I won't comment on his theories or experiments, but I don't believe that he was careless in his choice of candidate. He chose you. That means he knew what he was doing. Perhaps. I just think that if you accept someone else's things, you should honor their wishes. That's a good thing. It means that you have integrity. Thank you, oh my god, thank you. See, you get me, Kale. It's a good thing Alhaitham isn't here right now. He'd be quick to explain why you're wrong. Seems like you always include him in the conversation, even when he isn't here. Yep. No dinner with Kaveh is complete without a few words about Alhaitham. I sense that Alhaitham has in fact been here with us all along. He's here? Where? Why didn't you tell me? He lives rent-free in each of our hearts. Oh, that was horrifying. It literally sent chills down my spine. Good thing you didn't say that before we started eating. That would have killed the mood in a heartbeat. All right, enough about Alhaitham. Tainari, did you achieve what you wanted out of the championship? I did. In the first round, in fact. Word of mouth proved very effective. I spoke to a handful of people, they told their friends, and so on. Now, a record number of people have signed up to attend the next lecture. Oh, are you free next month? You should come along. Maybe even say a few words. About what? I don't know the first thing about anything Amorta related. Just play to your strengths. For instance, you could talk about the distinguishing features of rainforest architecture. Or ask everyone not to chop down too many trees the next time they're building a house. Oh, well, that's no problem. Sure, I'll make time. Has everyone had enough to eat? I can order more if anyone's still hungry. I'm full. Bang, I'm super full, too. If only we could eat like this every day. Yeah, we should do this more often. Work will always be there, but seeing friends is important, too. This is a good restaurant. Let's definitely come here again. Sounds good. We should pick a few other places as backup options, though. There are other good places around here, too? Oh, and don't forget to invite us if you go. There's nothing we love more than good food. Kaveh, do you have plans after this? I was thinking of maybe going to the academia for some alone time. Nothing set in stone, though. Why do you ask? I'm not drunk. Not yet.
dangerous if someone finds his old research stash, right? Ah, holy smokes, you're right! He said he spent all that time researching in the desert, didn't he? So it's very possible that that's where he'd leave all his notes. Alright then, let's head off to Ara Village and try our luck! Didn't expect to run into you here. Oh, hey, Thumb. What are you doing here? And what are you reading? Are those? Sachin's notes? Yes. I came across his profile while I was organizing some documents and became interested in his research. If it wasn't for that, I never would have agreed to being a commentator. I had a hunch after seeing the fragment of his mind, and sure enough, I came here and found his research. Wait! So, you've read it already? Are you alright? How Hello. do you feel? I think you may have misunderstood something. वो अभिषेक को The ज़्यादा reason आवाज़ नहीं जा Sachin रही, काफी chose लो that जा रही है architect to वही. inherit his research क्यों? was that only he मेरा could हो गया really क्या अभिषेक? empathize with both the calamity and the humanity that these notes seek to convey. Only one who कल रात थे resonates किसी with these किसी पे sentiments भैया? would suffer and begin to कब? think of कल history as रात bleak, को, the 3 present as बजे, perplexing, 3 बजे. and the future as pessimistic. नहीं, Empathy मैं is a double-edged कितना sword. 1:30 बजे गया. Clearly, I am not the same sort of person as 3 बजे Sachin के was. आसपास Empaths शायद have many था भाई. friends, हुआ था? and their wide social circle comes with certain societal कुछ advantages. अलग But कुछ this also makes it hard for them to achieve their goals. क्या हुआ? अरे क्या बात है कि 5 मैन बुलवाया. खेलने वो लोग आ गए थे. कौन है वो? अंसारी लोग. मतलब यही मेली और नहीं अंसारी नली नहीं. अंसारी दूसरे हैं. अंसारी मेली के साथ भी तो खेलता है. अंसारी हो गया. क्या क्या नाम था उनके? चेन था ना? नहीं चेन था. भूल गया मतलब. अच्छे वाले जो है चेन तो परसों आया था अंसारी और हम किसके लोग साथ के खेलता अगेंस्ट. था? ट्रायो था बट हार गया. और कौन मतलब अंसारी किस किसके साथ खेलता था? अंसारी के साथ अंसारी होता है मेली और उनके लोग भी कभी कभार खेल लेते हैं उनके साथ. अभी पता नहीं वो आप मेली के तो स्क्वाड भूल में गए है कि उसको. नहीं. वही और मतलब कौन 4 रहता है हमारे वो? 5 मैन थे. तो हार गए पहला गेम भी. दूसरा गेम भी हार गए. सोमा बड़ करते हुए एकदम. फिर क्या बोलने लगा. ये वो है मैं सभी को बोल रहा हूँ. रईस तक फिर बोलते. कौन ये कौन थे तुम लोग? मैं रईस्ता. यार कौन थे? टोस्ट और ब्लरी. बचो. ब्लरी था. तो जब और लगा रॉयस्टा, एकदम मैं बोल रहा रोमा, हूँ. तू और एक जन कौन था? हाँ वो टोस्ट. टोस्ट ही बोला होगा उसको. नहीं टोस्ट तो वीसी में ही नहीं था. नहीं था. मैं गया तब वो था वीसी पे. बिना स्टार्टिंग में वीसी के कुछ खेला था ना टोस्ट. नहीं वो पता नहीं बट पहले जब ये शाम इन्होंने रैंक चालू कब किया पता नहीं. तब चोमा वीसी में नहीं था. रॉयस्टा, चोमा और जोश खेल रहे थे ट्रायो. फिर रॉयस्टा वीसी आया, जोश वीसी में था. तो दोनों बातें कर रहे थे. चोमा बाद में आया, म्यूट था. बट फिर शायद जोश चला गया. जोश या नहीं रॉयस्टा चला गया. फिर राजी आया उसके जगह. वो छोड़ो ना. तो मेन क्या हुआ कि तुम्हारा एकदम गुस्से में आ रखा था हार गए करके. ये नहीं होता बुलाने पर नहीं आता कोई. ये फिर बोलते बोलते बोला मैं सबको बोल रहा हूँ. रजिस्टर मैं आपको भी बोल रहा हूँ करके. आप भी ऐसे ही करते हो करके. फिर हो गया रजिस्टर का दिमाग खराब. रजिस्टर तो नॉर्मली चिल रहता है. हारने पर भी कोई दिक्कत नहीं. हारे वाले हैं हम सब. तो वहाँ एकदम पॉइंट आउट करने लग गया. भाई साहब इतना भड़क गया.
झगड़ा हो गया दोनों का। राजिक रहता तो और बोल रहा होता। था खाली वो मत बोला, गाली दे दूंगा। कौन गाली दिया? गाली दे दूंगा राइता बोला। कौन All सोमा? important things in life नहीं involve नहीं other राइता, people. As such, वो it's मत extremely करा, खाली difficult to गाली live दे a life दूंगा। that causes no harm ऐसा whatsoever तो to others. रास्ता बोला। उंगली उंगली किए यार राइता। If you really want to achieve your goals, you have to be prepared to make enemies along the way. Not आखिर में everyone can इससे deal मैं with बस that म्यूट reality. दिया, चुपचाप बातें कर रहा था राइता। And that reality is like the material here. Objective, heavy, negative. But at the तो end of the राजिक day, तब for इसी में all आया these था, वो experiment बातें कर results रहा and था conclusions, और it's just सोमा one म्यूट डाल person's के बैठा था। perspective. तब Sachin's. उसका और वो तो बात नहीं करता है ये सालों तक गेम में भी लिखने नहीं होता ऐसा वैसा। फिर पता नहीं राजिक क्यों चला गया वीसी से। फिर सोमा बातें कर रहा था फिर लास्ट मैच में। So, what are your thoughts now that के you've बाद read में it? चला गया के। बोलना As नहीं a चाहता होगा, scholar, टोस्ट के Sachin लिए was खराब without a खेलता doubt है। a genius. He laid the blame for the कौन? darkness in the world squarely टोस्ट on के लिए humanity, experimented extensively with टोस्ट reliable मजे मजे में results, ले and रहा है, हार drew गए logical थे। conclusions. हाँ। In that sense, तो बोल तो one सकता might नहीं say his डायरेक्ट। views were correct. So, people are bad? कौन थे वो And लोग, things एक can मिनट only ever get worse? हाँ ये That is not a कैविनेटर question for me to अंसारी answer. योलो Someone दीनो। else will arrive केविनेटर तो shortly. You can इनका ask them इनका ही instead. साथ ही All I खेलता है ना will मेली say के साथ। is that the world और is मेली not के built on स्क्वाड में ही है correctness शायद। खाली alone. कर आए थे ना उसका Sometimes वो, उस being गेम में correct गेम means लगा nothing था। at all. Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps little decisions can. By their own choice, the idealist seeks to bring happiness to all while denying ऐसे themselves the उन्होंने same. इतना ही जीतना तो ला Thus, अपना they shall फाइनल never में reach खेल। even the borders of truth किसी ने until जबरदस्ती they थोड़ा ना wipe कर away रखा है the कि खेल ignorance that हमारे साथ। blinds them. I've never been able to काफी agree with भयंकर हो certain गया था वो। philosophies. Even Sachin himself इतना struggled to क्यों बढ़ comprehend गया the notion of सोमा? sacrificing oneself पता for the नहीं। greater good. But sadly, all viewpoints will find their supporters, and the way we see the world largely दिन पे decides दिन our fates. ML के चक्कर में खेलते Alright हैं, then. टोमा की तो एक I टॉक्सिसिटी। तो got what I रोस्टा का came for. अकाउंट खेल रहा है, तो These रोस्टा का research अकाउंट materials पे are yours to look वो उसने after. भड़कना I'll मतलब be off. ये देखा जाए तो कुछ यूज ही नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि देख उसका कुछ रैंक डाउन नहीं हो रहा है ना। रोस्टा भड़क का तो अलग बात है, क्योंकि उसका Get मैं together? हिस्ट्री देखा ना तो कल भी नहीं है। Yes, that makes sense. रोस्टा का तो This is मतलब a ही good नहीं है, तो opportunity मजाक for that मजाक sort में of thing. बोलता है ये हरा दिया वरा दिया। हाँ हाँ वो तो है, बट अभी Then देख I'm sure वो he packed up the एक तो leftovers for me. रोस्टा का See ya. अकाउंट खेल रहा है, रोस्टा का एमएमआर विन रेट जो भी है रैंक डाउन हो रहा है। मैं अभी जस्ट मैं देखा नहीं किसके साथ मैच बीच किया उन्होंने, मेरे को वो टूर्नामेंट का बोला था कल, तो मैंने टीम डालना था, तो उससे मैं सुबह बात किया उस बंदे से, तो मैंने मेरे को सेब का आईजीएन नहीं पता था क्या एग्जैक्ट। सेब बोला तो था, पांचवा बंदा मेरे को भी नहीं पता कौन है, तो इसलिए मैंने उसको डीएम किया, तो उसका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, उसको नाम देने, तो मैंने गेम खोल के सेब का आईजीएन देखा और डाल दिया। वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं था, बट मेरे को याद था ये इनके साथ कल खेल रहा था शाम को, तो मैंने हिस्ट्री में देखा रोस्टा के तो था, तो मैंने डाल दिया उसका नाम जो भी है। सी कैपिटल है कि स्मॉल है वो नहीं पता था मेरे को। So you asked him to take part in the championship? ये पता नहीं मुझे। Yes, it was me. रोस्टा का मैंने भाई देखा तो मुझे लगता है एक ही विन है कल शाम से, सेकेंड लास्ट विन है शायद। Because Sachin's research is not mistaken. He spent his entire life researching this topic, and these materials are a result of that. These are the crystallization of his wisdom. Yes, I was worried that the material might cause some पता disruption. नहीं यार रिप्लाई कब I आएगा ये didn't want वाले to वालों wipe का। away all his hard work searching for the truth. So instead, I had तो hack आज तो guys नहीं who would आएगा, help me keep an वो eye on इन गेम things. सपोर्ट का रिप्लाई फटक से Seriously? आता है, ये मेल वाले I think बहुत you can stop calling me धीरे that हैं। now. पर इन गेम सपोर्ट में है Don't कि you वो लोग like कुछ it? असिस्ट नहीं करेंगे तेरे को। Well, anyway, मेन तो मेन से ही होता है ना Sachin's chosen रिकवरी तो। successor hadn't been able to handle his हाँ research. उनसे ही होता है, बट or if वही it है got ना, ये planned to गेम more सपोर्ट people, वाले जो है वो he भी would have होयो वाले ही है, intervened at a बट वो suitable लोग moment. गेम के बारे में after all इंफॉर्मेशन that, देंगे, अगर तेरा person ग्लिच हुआ है Sachin कुछ है, chose turned his वो nose साले up at his या life's कुछ work. गड़बड़ हो रखी है इन गेम। Pretty हाँ hilarious. तो
वो तेरे को केस तू बताएगा, तेरे को तू बोलेगा मेरा ऐसा ऐसा इशू है तो बोलेगा मेल कर या फिर केस नंबर मेल दे, नहीं, देखो जैसे जो मैंने, हाँ वो और केस नंबर That देगा तो wasn't बोलेगा कि necessary. भाई I'm still वो paying you back for your help. जो And the ओनर last है thing उसको I ही need इंफॉर्मेशन is मिलेगी, more हम reasons to be indebted to सिक्योरिटी you. रीजन नहीं देते किसी और को। तू कितना भी बोल ले मेरा ही अकाउंट है मेरा ही अकाउंट है, नहीं देंगे वो लोग, ऐसा सीन है, पागल लोग है भाई। कोई नहीं, मेल का ही वेट कर लेंगे। मैं भैया आपके में ये देखो गांव जाने वाला हूँ ना कल, शायद वो भागवत है तो जाना पड़ रहा है मजबूरन। तो मैं आपके में अपना जीमेल साइन इन कर दूँ तो चलेगा? दे देना मेरे को, मैं देख लूंगा अगर आया तो। जो भी डिटेल चाहिए, देखो वहाँ का दिक्कत ये है ना कि नेट नहीं चलता, बहुत मर मर के चलता है, मुश्किल से एकदम। दे देना, मैं अच्छे से रिप्लाई भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। वो कोई डिटेल की जरूरत होगी तो कॉलिंग करके मैं कॉल कर सकता हूँ, मैं बता भी पाऊंगा। हाँ but none of them objectively describe the shroom boar. Paimon kinda gets it, but also not really. The world is the same way. No one, not even I included, can understand it in its entirety. All of us are somewhere on पता the नहीं है, path टूर्नामेंट toward में तो truth, एंट्री तो डाल within दी, the इनका confines of झगड़ा our limited knowledge. ये कुछ Some नहीं, may एक दो दिन का blindly रहता believe है। in the beauty of this world, नहीं पर and कुछ ज्यादा ही others may कर रहा है focus ना आजकल, only टू on मच its टॉक्सिसिटी, evils. हर किसी से लड़ने में लग गया गेम के लिए। In होता है truth, वो the most तो, important thing isn't what state मेरा the भी world is होता है in कभी now, कभार, बट but what मेरा people hope उसी it will दिन तक become. रहता है, उसी And of मैच course, तक, और उसके I बाद don't थोड़ा mean देर that बाद as a में मैं भूल criticism जाता or हूँ। a call to action. और जिसको मन Ultimately, पे लेना वो my ले ले, duty फिर as मैं the उनसे god of wisdom is to कांटेक्ट ही guide नहीं करता। every form of wisdom to a place इधर where के it जो can लोग हैं find वो its कभी लेते purpose. ही नहीं That है, was a उनको long पता है speech. मैं So what are ऐसे you भड़क actually जाता हूँ going to तो। do with these research materials? Because Kaveh, as the successor of this research, does not wish to see these ideas disseminated, I will seal it up. But even though Sachin's research could be considered negative सोमा भी wisdom, वैसा ही है, it is still वो a building आ block of जाएगा the थोड़ी truth. देर में, और If someone रोहिस्ता के wishes to साथ ही follow बात in his करेगा फिर। footsteps in the future, नहीं वो I तो will रात not पे ही stop them. ठीक हो I गए थे, also look forward to the day that a member of सुबह the होते होते Bahumana मतलब। Darshan can not हो only जाता है वो। comprehend his मैं theories, कितने बार मैं but also सोमा के find a साथ way झगड़ा किया out है from the भाई। despair as well. Vahumana doesn't have that kind of talent. Wait, you're not intending to keep me in Vahumana long term, are you? I don't remember signing up to become a scholar. Don't you think I'm useful enough to you as a prisoner? Oh boy, here we go again. You think so? Well, to that, I would say that in Sumeru, even prisoners have a right to an education. I hope that your studies in Vahumana will help you deal with your own fate and learn how best to settle old debts from your past. I will reveal your final thesis myself. I'm यार expecting इवेंट में great कितना things डायलॉग from हुआ you, आज ये, मेरे Mr. को Hat बस Guy. 2-3 दिन का ये खत्म करना था, लॉस्ट अकाउंट फिनिश हुआ। Squall and Fury! Add Astro. Behold!
ओ भाई कितना बड़ा था ये क्वेस्ट। Would you like to a shot of tea वगैरह एंड वगैरह एंड वगैरह। नया इवेंट कर लिया क्या? नहीं, मैंने कल वो पुराना वाला इवेंट ही खत्म किया कल ही। वो डेजर्ट वाला। हाँ वो डेजर्ट वाला लास्ट वाला मैं 3-4 बार किया। मैं बार बार मेरे उधर ही स्पॉन हो रहा था और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरे को समझ ही नहीं। अरे मैं बोला ये खत्म क्यों नहीं हो रहा बाद मतलब मैं इधर बातें कर रहा था, मेरा ध्यान ही नहीं था। मैं जस्ट ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहा हूँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ से कर करके भाई। मैं एक बार घुस गया था पर क्या बोलते वो देखा मैंने। मैंने ये लास्ट लीव लास्ट करके में ट्राई फिर किया। से घुसा, तब मैंने नोटिस किया कि मैं बार बार कर रहा हूँ। फिर मैंने एग्जिट किया और फिर कर दी मतलब। फिर वो मेरा रिक्वेस्ट विक्वेस्ट बाकी था तो वो करके वो बंद कर दिया। मेरे को इतना याद था इवेंट तो किया है मैंने आराम से। क्या बोलते हैं वीकली कमीशन करने बैठा था वो जोमा और क्लॉस दोनों का। देख फिर क्लॉस का खुला देखा तो इवेंट ही नहीं कर रखा मैंने, शुरू भी नहीं किया। फिर तो जो स्पीड में लगा एकदम।
following me. Too slow. Shine down! The Temple of Wisdom! Spring forth! Propagate! Everyone hold hands! Now ye shall perish! There is no escape! Let's move out. Allow me! Inazuma shines eternal! Shine down! Grow! Share my knowledge! Spring forth! I see everything! There is no escape! Torn to oblivion! Shine down!
rises. हेलो अभिषेक। बोलो। ये जो नया वाला क्वेस्ट है उसका जो सेकंड पार्ट कर रहे थे, क्या आज आ रखा है कि कल आया था? आज आया, थर्ड पार्ट है वो, लास्ट। अच्छा, मतलब मेरे को सेकंड तक ही करना है, बाकी क्लास को मतलब सेकंड तक ही करना है मेरे को, कल तक का। यार नहीं ऐसी इवेंट पूरा आ गया क्या? नहीं अभी कहाँ, अभी इवेंट आना बाकी है। तो शायद 2 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से आने में।
परसों तक आएगा पूरा इवेंट। ठीक है, आज वो कल तक का मेरे को करना है, कल तक जितना भी आ रखा था। और फारूजान मिल गई एक। फारूजान को थोड़ा अपग्रेड किया जाए भाई, मैं थोड़ा हीरोज बिट्स खत्म हुआ, 1000 के ऊपर पड़े हैं हीरोज बिट्स, पता है? बस थोड़ा मैंने फार्म किया था जो है, फिर उसके बाद मैंने आर्टिफैक्ट से फार्म कर रहा हूँ। मैं सोचा 1000 वो कर देता हूँ हीरोज बिट्स और 11-12 मिलियन मोरा कर दूँ, फिर उसके बाद मैं आर्टिफैक्ट बस फार्म करूँगा। कुछ भी फार्म करने के लिए, आर्टिफैक्ट मैं बस फार्म कर रहा हूँ सिर्फ फार्म करने के लिए। एक सेकंड ना। फारूजान को 70/80 करना है। ये चाहिए। Solidify! Fate is upon you. Rise. The wind rises. Stabilize! Wretched vermin. Behold. Gather! Squall and fury. Oh. परमानेंट विश कर देते हैं, कुछ मिलेगा तो है नहीं। Solidify! Written in the stars. Wheel of life. Search for it. Upon the gale. Cry louder. Stabilize. The wind rises. Upon the gale. Search for it. Too slow.
minute. Squall and Fury. Gather! Decided by destiny. Let me scribe. Go. Behold! Upon the gale. Upon the gale. Unsightly insects. Solidify! The wind rises. Search for it. Quit following me. Behold! Written in the stars. Shadows of life goes on. Wretched vermin! Squall and Fury! आज मंडे था, मैं तो ये भूल ही गया. चलो मार लेते हैं. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Not bad, not bad. Not bad. Steve got a trick or two. Let me scribe. Wheel of life. Something else catch your eye? Delved into death. Behold! Search for it! You're a cut above. The wind rises.
worm! Swarm Fury! Feeble human! Stabilize. Search for it! More power! Wind rises. A thousand eons, mine to dominate! Burn to oblivion! Gather! Solidify. Kneel! Gather. Reality is pain! Stabilize. Solidify. Good riddance, cruel world. Behold. Possible. Stabilize. Written in the stars. Delved into depth. Life goes on. Swarm Fury. Cry louder. Behold, I was destined for more. As an umbrella. लियो अभिषेक की कैसे मिनट से रीजन वाला Shadows of the Cove.
Squall and fury. Upon the gale. हाँ क्या बोल रहे हो? वीजल वाला इवेंट। वीजल वाला इवेंट। कौन सा वाला इवेंट? गाने के बीट में जंप करवाने वाला। Upon the gale. नहीं क्या क्या वीजल? तो समझ आ रहा है कि रुकना जरा हाँ गेम के नीचे बहुत ज़्यादा है। Wind rises. ये मर गए तो उसके बाद में ये आवाज़ समझ में नहीं आ रही। ये जानवरों के साथ करने वाला इवेंट बड़ा अच्छी वो गरीब सोचा है पर वही है। तो फंगाई वाला इवेंट की बात कर रहे हो क्या? नहीं वो पहले वीजल को बीच पर नचवाना था फिर सुंदर से दीवार तोड़ना। सुबह से दीवार तोड़ने वाला। Wretched vermin. Gather. Squall and fury. Upon the gale. Solidify! Too slow. Behold. Upon the gale. Gather! The wind rises. Stabilize! Squall and fury. Fate is upon you. Rise. The wind rises. Quake! Solidify! Let me scry. Delve into depth. Squall and fury. Wheel of fire. The wind rises. Squall and fury. नेट हुई या नहीं नहीं देगा होइया। ये अच्छा फारूजान पे कौन से आर्टिफैक्ट सेट सही रहेगा? हेलो वीवी भी चलता है अगर वॉन्डर को वो वाला लेकिन सेट में चला। वॉन्डर है ना तो वॉन्डर के साथ वीवी क्या करेंगे? वॉन्डर को अगर वो वाला सेट नहीं दे रखा है जो उसका था ना डोमेन का। मैंने उसी का दे के रखा है जो उसका खुद का डोमेन का था। हाँ तो वीवी दे दो फारूजान को। और फिर नोबलेस डाल दो फिर। गिराती है रेजिस्टेंस। अरे तो भाई वो दूसरे एलिमेंट का गिराती है ना जिससे एनिमो रिएक्ट करता है। जब मैं डैमेज एनिमो से दे रहा हूँ तो उसमें कैसे वो काम चलेगा फिर? देखो मोस्टली तो वही था। और फिर नोबलेस डाल दो। हाँ नॉबलेज डालता था क्योंकि देखो भाई जब वो स्वर्ण करेगा ना तो उस एलिमेंट का करता है जिस एलिमेंट से एनिमो रिएक्ट करता है। लेकिन मैं डैमेज तो एनिमो से दे रहा हूँ ना। वीवी का काम तो एनिमो का ही तो रेजिस्टेंस गिराना होगा। नहीं भाई वीवी का काम उसका रेजिस्टेंस गिराता है जो एनिमो से रिएक्ट करता है। एनिमो को थोड़ी गिराता है
वरना सब पे एनिमल 4 पीस चलता ना। क्या? सिर्फ उस पे ही गिराता है जिससे रिएक्ट करता है। जैसे मान लो तुम्हारा हाइड्रो से रिएक्ट किया, उसने स्वर्ल किया, ठीक है ना, तो हाइड्रो का रेजिस्टेंस गिरेगा, एनिमो का नहीं गिरेगा। ये तो 35% अगर वो एनिमेशन गिराता तो शाओ पे स्कारमिश वही सेट तो चलता अभिषेक भी है कि नहीं। तो अब गए नहीं आप? ये कल का प्लान है। आज का प्लान क्यों नहीं है भाई? कल कब निकलना है? क्या कर सकते हैं आप? सुबह के टाइम 4:30 बजे। ये सोमा का आवाज ऐसे क्यों आ रहा है अलग? मतलब ये बफ अलग आ किस रहा हिसाब है। से देती है भाई? अपने एचपी पे देती है, अटैक पे देती है, किस पे देती है? अटैक अटैक। अटैक पे देती है। यस। मैंने वो टीम डाल दी है, सेब नाम डाला है, CB हाँ हाँ करके। सेम स्मॉल में हाँ CEB। कल होगा मैच शायद, देखते हैं अभी क्या है। अरे नहीं है, किसी पे भी नहीं रहता है वो। क्या? फारूजान का वो लेवल को अपग्रेड करने से रहता है, वो बाकी किसी चीज से स्टैक नहीं करता उसको। अच्छा एनिमे श्रेड पूछे था क्या? हम्म। मतलब कि वो डैमेज स्केल किससे करता है? नहीं, मैंने कहा था वो किसके करता है, वो बफ जो देना होता है उसको। वो तो लेवल से। तो इसमें कुछ भी मैं डाल दूं, मेरे पास जो 4 पीस नोबलीज के लिए रहे हैं, और क्या। एनर्जी चेक करना है, इससे एनर्जी एनर्जी रिचार्ज तो मैंने डाला है उसमें, बाकी देखना है इसमें। कोई भी डाल देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा अभी अपग्रेड करने जाना है उसको। इस पे वेपन भी तो कोई हाथी के डालना वजह पड़ेगा। से पानी यूज ही नहीं होता ज्यादा तो आप भाई। एक बात बताओ, आपका रीनेम कार्ड पड़ा हुआ था ना फारूजान का, सॉरी वो स्कारमुश का। यप। तो अगर आपने ऐसे कोई नाम भेजा है और से रीनेम कर दिया तो? रीनेम कर दिया तो क्या, स्टार्टिंग नाम तो वही था। नहीं पर दिखा। कार्ड रिसेंटली यूज हो रखा है, वो भी तो पता चल ही जाएगा। उसको पता ही नहीं है कि गेंशिन लॉगिन है। अच्छा हाँ मतलब गेंशिन उससे कनेक्टेड 2 दिन से वो है, ऑफलाइन है अकाउंट। अभिषेक वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया होगा तो सब लोग। मैं कहाँ से ज्वाइन कर लूंगा, वो सिर्फ लीडर्स का ग्रुप है ना। नहीं वो लीडर का नहीं, दूसरा चैट ग्रुप। एक चैट ग्रुप पे मतलब स्क्वाड, मतलब जो मैच होगा तो कॉलिंग के लिए टैग पे। पार्टिसिपेशन होने चाहिए उधर सब। यही फुद्दू गिरी है। कौन सा ग्रुप? अरे वो टूर्नामेंट का कोई ग्रुप है फुद्दू जैसा, उसमें ही जाना है। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया क्लास का, बस ये रह गया पता नहीं। कौन होस्ट कर रहा है? टूर्नामेंट कौन होस्ट कर रहा है सोना? जीरो सेंपाई ये करके। हाँ। जीरो सेंपाई फ्री एंट्री प्राइस पुल 3K। सुबह क्या हुआ पता है? क्या? ग्रुप में वो ना उसने वो पोस्टर डाला। हम्म। तो मैंने पूछा एंट्री तो क्लोज हुई है,
तो नहीं, मैंने पूछा एंट्री क्यों क्लोज हुई, तो बोलता है स्लॉट रो। तो मैंने पूछा ये क्यों डाला फिर, तो कुछ रिप्लाई नहीं आया। वो खाली एक चौक वाला इमोट रहता है ना, वो डाला। तो फिर दूसरा बंदा बोलता है वन स्लॉट अवेलेबल, तो मैंने डीएम किया उसको, तो उसने डाल दिया मेरे को। ये क्या है भाई, फालतू का क्वेश्चन वाला इवेंट? अरे क्या है ये? तो ये पहला वाला कर रहे हो? ये नहीं, कौन सा है ये? करना क्या है इसमें? इसमें तुमको आंसर बताना है भाई। तुम्हें स्टोरी पढ़नी है, क्लूज मिलेंगे, तुम्हें पूरा इन्वेस्टिगेट करके बताना है। यूट्यूब यूट्यूब। अरे वो बर्ड होता है भाई, पहले पहले का आंसर बर्ड है। उसमें काफी सारे हाँ ऑप्शंस मिलेंगे तो समझ देखो, जाओ उसमें बर्ड रेन है। फॉल, फाइंड द ट्रूथ सीधा करो। स्ट्रीमर ही हाँ होगा और क्या। तो स्ट्रीम तो करो। हाउ डिड क्या है ये? यार इवेंट जंक्शन इम्पैक्ट। होप किधर है? स्ट्रीम करो भाई। क्या स्ट्रीम करना है? हाँ चल तो रही है, चल तो रही है स्ट्रीम। नहीं चल रही। मतलब है Stabilize. डिप्लॉयर। सेकंड फोर। वाईटी या फेसबुक? कहाँ का स्ट्रीमर है सुना? वो वाईटी का है कि फेसबुक का है? नहीं वो तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं उसमें कुछ। ये वो बीटी, उसमें तो ये बीटी होगा ना उधर ग्रुप है बीटी पर, वो पता है उसका? क्या किस कहाँ का स्ट्रीमर है वो? वाईटी है फेसबुक है? वाईटी होना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से नहीं, तो। उसने कुछ डाला ही नहीं पोस्टर पे। उसने गोसु की वाईटी ही रहेगा। गोसु जो गोसु का वो है, वो नहीं जो रिचार्ज करता है गोसु जनरल वो तो ड्राउन। सैम भाई। हाँ तो उसने उसने वो डाला था पोस्टर अपना। तो सैम भाई। सब स्टेट्स तो करते ही हैं। हाँ धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है भाई। आज रीसेट हुआ। छः 620 हैं 800 पे।
This realm... If you ever ये वीसे से कोई चला गया हेलो This realm is... कोई गया If you ever... Quit following me. Too slow. Ad Astra. Thank you for Ad Astra. Quit following me.
This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Not bad, not bad. Guess I should take it more seriously. Too late for regrets. Behold! Dare to mess with me? Squall Fury! Gather! The wind rises. Search for it. You're cut above. कोई वैसे पर आया होप आया होप हम हैं और कोई नया नहीं। लाइट चली गई इतना जस्ट हम डाउन हो गया सब। सैज लाइफ Solidify! The wind rises. Insignificant past! Too slow. Search for it! You can... I am the all-knowing God! Burn to oblivion! Kneel! Solidify! Stabilize! Tremble! Reality is pain! Solidify! Burn to oblivion! Stabilize! Good riddance, cruel world! Squall Fury! Possible.
Solidify! Truth repeats its course. Behold! I was for more. Too late for regret. Allow me. Cry louder! The wind rises. Search for upon the gale. Search for it. Solidify! Behold! The wind rises. Quick fall. Behold. Search for it. Stabilize! The wind rises. Stabilize! Squall and Fury. Behold! Stabilize! Have fun with this gift. Hold the line. Quit falling, wretched vermin! The wind rises. Gather! Behold! Allow me. Squall and Fury.
The wind rises. Stay right there. Looks like I went too far. I guess this is it. Quit following me. Behold! Solidify! Dare to mess with me? Hold the line! The wind rises. Stabilize! Squall and fury. Upon the gale. Upon the gale. Can't run from death. This realm is If you ever... जरा स्टार रेल खेलने लाइला का भी 2 पर्सनालिटी है ना इसमें? क्या लाइला का क्या लैला का 2 पर्सनालिटी है। हाँ 2 पर्सनालिटी
हाँ सेव किधर हो? हेलो सेव। हाँ हेलो हेलो हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाना खा रहा था। क्या खा रहे थे? मैं देखो कढ़ाई गोश्त और रोटी। बस बताया भूख लगवा दी आपने तो। कुछ खेल रहे थे अभी? हाँ वैलोरेंट खेल रहा था। ये नहीं खेल रहे? होंकाई स्टार रेल? नहीं भाई। ऐसा क्यों? हाँ अरे अभिषेक भैया। क्या हुआ? वैलोरेंट है ना आपके वैलोरेंट? Genshin. नहीं इंस्टॉल कर दिया। Yes, General. इंस्टॉल करो ना। Watch this क्या? person carefully. ऐसे खेलते हैं? नहीं मन नहीं कर रहा। आज नहीं कल परसों You खेलेंगे। remember me? I remember. सेव भी हैं, Of 5 शेव बुला लेंगे। people, 3 must pay a price. You are not one of them. क्या बोलते? Jin Yuan. Of ऑफ की 5 तो बधाई हो रही है आज। 3 तो must होस्टल से pay आने a में price. छोड़ के जा रहे हैं सर्वर। Are one of them. हाँ कितने हो। दिन के लिए जा रहा है? हो कितने दिन के लिए जा रहा है? Hold on. I'll be there soon. 8-9 तारीख तक शायद आ जाऊं। He's definitely sleep. We वो सर्वर छोड़ trailblazers के जा can रहे go days हैं। कह रहे without अब नहीं sleep. आएंगे। But when we do hit the hay, we And I have to hope- make up. The conductor wants us to attend a warp navigation meeting. I hope- Same old location apparently. And we can't be late. Let's head over. कहाँ गई? You drew the short straw. It's your turn to wash the coffee cups this week. Stay tuned to find out what happens. Morning. You're very punctual. Oh, I can't remember the last time I got such a polite response. The trailblazing of Eurilo 6 is drawn to a close, and the Astral Express must depart for the next planet. Not telling yet. We'll make an official announcement in the meeting. The meeting will start soon. कहाँ जा रहे हो? I hope। क्या बोल कहाँ है रहे भाई? Passengers, सर्वर छोड़ के क्यों जा रहे हैं पूछा? meeting has officially begun. तू Firstly, जा रहा है क्या? Pom wants to congratulate you, अरे आपने तो बोला भी 8 तारीख तक नहीं आ रहे। successfully resolving the problems at this stop. The express is now हाँ? able to continue along the कुछ नहीं, कान का इलाज करा के आज इसके बाद बात करेंगे आगे की। हेलो गाइस। It's time for your conductor. हैं? ये लोग कौन बोला? That's me. To reveal the Hello, name of our next guys. stop. अच्छा सेव। Long time no see, Astral Express crew. हाँ से बताओ। कुछ नहीं ब्रो। चलो मैं खेल रहा हूँ वैलोरेंट। Every single स्ट्रीम कर दो फिर। No need for the नहीं mysterious नहीं introduction. वैसे Stellar कर Hunter. सब लोगों की आंखों से खून निकलेगा। तो वही तो देखने में मजा आता है। प्रो गेम प्ले कहाँ देखते? Apologies for interrupting your little get-together. है कि नहीं? But I'm sure once you've heard my request, you'll forgive me. I'd like you to make a destination alteration. I've seen your face before, Stellaron Hunter. तो मैं नया वाला Even वर्ल्ड if it पास was मैंने only कर लिया a था कि नहीं कारी corporation बेल्ट वाला? wanted poster. कौन सा? They were offering quite the कारी bounty. बेल्ट वाला है और डांस Dead टेस्ट का जो नया वाला or है। alive. नहीं Do you नहीं know the figure? करना है वो। Doesn't concern इवेंट कैसे me. करूँगा फिर मैं? Then again, a यार तो corporation आपने बताया bounty ही is a नहीं। मैं तो गेम ही नहीं खोल compliment पा। to not an insult. आपने तो बोला था। Don't you think? ओ The higher the figure, the I bigger hope। the compliment. You wanted आपने जरूरत criminals था। sure know how to look on the bright तो बोलते हैं side. अकाउंट बुस्टिंग I will मतलब ये say, मेंटेनेंस होता है कि Curtis अपना certainly pays अकाउंट you all a आपको देख के भूल compliment. जाना। A maniac that claims he can स्टोरी see कौन करेगा destiny, फिर है? leading छोड़ a दूँ? bunch हेलो of wild भाई lunatics हेलो in आपने कहा था भाई pursuit भूल of जाना the most अकाउंट। dangerous हमें भूल भूल गया तो भाई जाना बुला रहे थे। बट And Herta इसमें doesn't क्लियरली give out मेंशन्ड compliments है very भाई। often.
एक्स्ट्रा अगर कुछ भी ऐसा आएगा जिसकी वजह से रुकावट आएगी सीधा छोड़ दिया In जाएगा। pursuit of the ऐसा most कुछ नहीं है भाई, dangerous objects in the मैं भूल गया मेरा कुछ universe, huh? अकाउंट भी है, तेरा पापा हर याद दिला रहा जगह हर You're in the जगह हर wrong देख place, रहे ना Kafka. हर We're फैक्ट not हुआ about to accept your मेंशनड request, and I we're not won't be about to get into bed responsible with a for that. Stellaron hunter. है। ऐसा कि मैं Besides भाई talking मजे with मजे you, नहीं, कुछ नहीं है perhaps ऐसा next कुछ। time you'll मजे be कुछ willing to pay नहीं us a visit in हाँ person, कहाँ से आ and रहा we है? can continue our little discussion. Have you guys heard of the हाँ lawful? आपको इसको देना ठीक है। पागल है क्या? The Xianzhou lawful? ये छोटा सा काम नहीं कर It पा रहे belongs आप। to the वो Hexafleet छोड़ of दे the तो भाई Xianzhou साहब Alliance. इतना ही We've नहीं हो heard. रखा है। But what you वजह haven't क्या? heard is that it's ऐसा मत करो भाई currently हो। very close to you. A couple of warp jumps away, in हाँ हो। fact. Not to mention, 45 system hours ago, a Stellaron burst occurred on the Lafu. An unexpected calamity, don't you think? What exactly are you ऐसा मत करो Stellaron हो। hunters trying to do? मैं The क्या कर Xianzhou रहा हूँ? Alliance aren't us. They won't give you time to explain. Once you draw the attention of the hunt, भाई you 50% become क्रिटे आज से their क्रिट नहीं पड़ता, मैं तो और दिमाग The खराब हो रहा है इस Alliance चीज पे। will hunt you to the end of the universe. Stop speaking in riddles, Kafka. Say what you have to say. जल्दी से लेवल 35 हो जाऊंगा, That 35 Stellaron 10 has कुछ मिलेंगे nothing और to do with 28 us, चा but मिलेगा। the Xianzhou is convinced that we're responsible. My companion, Blade, has been taken away by the Cloud Knights. I want to bring him back, resolve this Stellaron crisis, and clear our names. Nothing to do वो with लेकिन you? गेंशिन में Yeah, और right. सेम इसमें Sounds like शुरू a में लगता था weird भाई coincidence कितनी to आसान me. लेवल बना। Also, we're not your 40 के ऊपर friends. पहुंचो समझ में आ जाएगा। Why should we 55 के care if ऊपर। the Stellaron hunter is innocent, हाँ अभिषेक भी है। मर गया कभी, क्या नहीं बच गया कुछ भी। No! Why are we 55 तक listening यार to बड़ा her? आसान रहता The है। alliance is strong. जैसे Is a 56 का आता है single वही सदमा Stellaron पड़ burst जाता है। really too much for them to handle? We're the है crew कि of नहीं? the Astral Express, not some squad of Stellaron stealing super 1 लाख एक्सपी चाहिए, specialists. कितना 1,30,000। हाँ अब बोलो क्या है? मैं बोल रहा हूँ यार 50 तक तो ऐसे ही मतलब कितना 50-60 हजार एक्सपी चाहिए होता है लेवल के लिए। 55 पहुंचो तो डायरेक्ट 1 लाख के ऊपर। 2 लाख के ऊपर। 2 लाख के ऊपर कितना डिफरेंस हो जाता है। You could, of course, not get involved, knowing that the Stellaron hasn't yet affected this region of space. Bro, stream नहीं किया You आपने। could make the jump and arrive at the next world. But sooner or later, Hello, bro. the star rail here will be more blocked Stream कर off दो। than it was before. I can tell you what the future holds. If you don't go to the Lafu, the Stellaron Think will hope कल आप eventually इसी पे सोए नहीं यार। contaminate the entire ship. And over half of the inhabitants I will hope. perish. Oh, you brave and fearless trailblazers. You कह रहे? benevolent, nameless. This companion of yours, Blade, No comment. किधर हो होप? Here are the coordinates. It's up to you how to proceed. Our destinations may differ, but the orbits of the stars will eventually converge. See you later. March. Get Don Hung. Whoa, what are you doing here? I gave him the lowdown. Hey, remember what I said, okay? We're gonna vote against it. I'm not gonna take orders from that woman. Are you okay, Don Hung? March brought you up to speed, I assume. I'm fine. And yes, I'm up to speed. Good. In that case, with regard to the matter at hand, let's vote to decide our next move. Our Stellaron hunter claims that a Stellaron burst has occurred on the Xianzhou Lafu, and that we're in the vicinity. If we head for the Lafu, we may have the chance to save many innocent lives. However, it's also possible that our Stellaron hunter is lying and using us for her own ends. Neither so, we're about to hold a democratic vote on whether to set a course for the Xianzhou. All those in favor,
hold out your hand. All those against, keep your arms by your side. 3, 2, 1. Four against 1. Well, it looks like the Astral Express crew has a majority vote to head for the Xianzhou. किधर हो bro? I calmed down and thought about it a bit. If it turns out that woman isn't Bro किधर है lying, bro? then a lot of innocent people are gonna... All right. I think we're all used to March's modus operandi by now. So, Dan Heng, you want to stay here? Yes. I'm staying this time. In that case, Welt, ready for a trailblazing expedition? ये I know you've been itching to get अभिषेक out there for a while now. But make sure you take good care of the TCG two of वाला them. जो आ रखा है इसका स्टोरी कहाँ से है? TCG वाला? TCG का इवेंट नहीं है? वो स्टोरी नहीं है भाई, वो समझ लो उसकी तरीके का है, जैसे ले लाइंस का नहीं आता है वैसे टाइप से है। तुम अगर जैसे किसी को इनवाइट करोगे, वो जो नोटिस बोर्ड नहीं लगा रहता वहां से इनवाइट करोगे ना, तुम्हें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखेगा, वहां से इनवाइट करोगे तो मैच अगर जीतोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा वो मिलेंगे रिवॉर्ड्स, बस वही है वो। कोई नहीं इसमें कुछ है काम का, मतलब वो प्रीमोजम्स वगैरह नहीं, प्रीमो नहीं है, बस तुम्हारा ये है कि तुम्हें कॉइंस ज्यादा मिल जाएंगे इसमें, तुम अगर तुम उस वाले मोड में खेलोगे बस। तो कोई मतलब भी नहीं है इसका। जॉब कर देना, कॉइंस मिलेंगे। Destination Xianzhou, here we come. The train हाँ, is about to make the jump. 5, तो फिर क्लास को बोलते हैं कि सब 3, 2, 1. होप कर देना, होप वो भी कॉइंस मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। किसी हाथ नहीं लगाएंगे, हम पहले ही बता चुके हैं। फ्री का माल नहीं छोड़ना हो। बिल्कुल फ्री। Whoa! So that's a Xianzhou ship? It looks even bigger than Eurilo 6. For the Xianzhou, these ships are their planets. Terrestrial भाई environments भाई are फ्री में तो दे रहे हैं, और क्या दे allow रहे हैं? civilizations to survive and then develop. Some of those civilizations progress further, constructing spacefaring vessels, which allow them to voyage into the unknown. The Xianzhou Alliance is one such civilization. I've only glimpsed it a few times, but it's as magnificent as I remember. You okay there? What's with all... This is the Astral Express. I repeat, this is the Astral Express. We have arrived in Xianzhou territory. Requesting landing permission from ground control. From the bridge, I mean. Welcome to Lawfu Skyport. Starskin Ven. Please await transfer. Please wait transfer. Please wait transfer. Something's not right. The signal is still repeating, but no one is guiding us into dock. Maybe the Stellaron hunters were telling the truth. It seems like something really did happen to the Xianzhou. A vessel arrives at a deserted spaceport. Isn't that how, like, loads of horror movies start? Let's not let our imaginations get the better of us. Please wait transfer. Please await transfer. Please wait transfer. Still the automated signal? Yes, it's still on repeat. Ah, there we go. The Jade Gate now opening. On behalf of the Xianzhou Lafu, welcome, guests from afar. Please proceed to dock in accordance with the guidance. Huh? Is this still automated? The signal broke off. Seems that's all there is. We should get going. Imiko, stay vigilant back here on the Express. Relax. I've got Dan Heng here with me. Yes, but I won't be putting my feet up. There's a lot to take care of here on the train. Make sure you're properly prepared before you set off. Before we set off, I need to clarify the aim of this journey with you. The Stellaron hunters have given us a lot to consider, and
Precisely. The Stellaron hunters clearly have ulterior motives. However, knowing what they're all about, and given the focus of Kafka's words, the Alliance and the Express haven't had any previous dealings, so our arrival might not receive the warmest welcome. But as trailblazers, we're not in this for fame or gain. We just need to do everything in our power to assist the... Always keep that in mind. And don't forget the way of the Trailblaze. Explore, understand, establish... Yeah! Let's go. Oh, look. It's just containers as far as the eye can see. This area isn't Hello, for Hope. receiving guests. It's for unloading cargo. Who decided कितना to हो गया send अभी us this विश way? कितनी Such कलेक्ट हो a गई huge रीडिंग port and रीडिंग कर not लिए a 5 soul 5 in sight. ना ना बस कमीशन किए थे क्रॉस का पहले सारा इवेंट निपटा रहा था अब तेरा अकाउंट खोला है अगली बार क्या बोलते हैं 2 तारीख से क्या होता है एक हफ्ते क्या करोगे They're in my bad books already. Mr. Yang, what should we do? अगले एक वीक We should कैसे start करोगे with the person who opened the Jade Gate. If it turns out they're not friendly, then at least they've already made things easier for us. If it turns out they were just doing their job, then we can ask them what happened here. तू कर लेगा तो ठीक नहीं तो किसी और को थमा के जाना पड़ेगा किसको Are you forgetting we've got Mr. Yang देखता with हूँ us? Oh, right. किसी You रैंडम को haven't दे seen दिए what he can do yet. Let's move. Keep your wits about you. ना मेरा भी कड़े आया थे क्या बता आपको बाकी हाँ हो एक काम कर सकते हैं अगर मान लो एक वीक छोड़ रहे हो तो 9 एक कर दो एक वीक ना 7 दिन तो 7 महीने और करना एक दिन का 1 महीने का फाइन लगेगा छोड़ने का हाँ होप समझ रहे किधर गए होप Mr. Yang, someone's hurt. You're hurt, son. Try not... March, use your 6-phased ice to stop the bleeding. Go easy. We don't want to add frostbite to his list of complaints. I'm on it. This area saw fierce fighting only Let's keep searching. Up ahead. Please. There are wounded everywhere. The silver lining is that, based on what I'm guessing, the Xianzhou must have evacuated the port immediately, leaving the soldiers to... Up ahead. Up ahead. Up ahead. Careful. We've never seen this kind of fight. This is our chance. Lend me your strength. Yeah. Lend me your strength. Yeah. We shall take back what we lost. Miss Tingyun, fall back! They're Mara struck.
We've already lost them. Hey, you there? We need your help. Thanks for saving Beauty from the beast. Pleasure. But are you thanking us or giving yourself a compliment? Never falter! We've entered the storm. To guard and defend! Crush them! Rules are made to be broken. Let me tend your wounds! Finally! You have my gratitude. Is that all? Lend me your strength. Let's go. Miss Ting-Yun, the Mara struck have been repelled, but there could be other dangers nearby. The situation is serious. Allow us to escort you back to the Skyfaring Commission. Immediately. Calm down, I heard you. It'd be rude of me to depart without thanking our benefactors. My name is Ting-Yun. I'm the Ambassador for the Lawfu Skyfaring Commission Merchant Guild. May I venture to know the illustrious names of my heroes? Illustrious names? Sure. I'm March 7th. This is Mr. Yang. Oh, Mr. Welt Yang. And this is... I see. Well, thank you for coming to our aid. Although, there is one thing I don't understand. Starskiff Haven is under lockdown. Since none of you are Xianzhou residents, may I ask how you came to be here? If you can't offer an explanation, I'm afraid these Cloud Knights will have to escort you out. We called for port transfer and got no response, but then someone opened the Jade Gate for us. When we arrived, there was no one to be found, so we started to make our own way through. How can that be? My ship was the last one into port before the Jade Gate was shut. The Skyfaring Commission has already locked down Starskiff Haven entirely. We're telling the truth. You could verify it yourself by checking the access history of the Jade Gate. We found it strange ourselves when the gate opened, but no one came to greet us. You're with the Astral Express. You've heard of us? Indeed I have. Oh, you've arrived at a bad time. The Xianzhou has suffered an incident. Whether you're here for leisure, treatment, or trade, I'm afraid you won't be able to go through with. For your safety, you should hurry to Central Starskiff Haven and take refuge. I'll take you. We caught wind of the incident you mentioned. That's why we're here, Miss Ting-Yun. To help the Xianzhou seal the Stellaron. Your actions have already revealed your kind hearts to me. Sadly, I can't make you any promises. You're outsiders, and only Madame Yukong— Oh, don't worry. Madame Yukong is kind-hearted too. Those monsters back there. I could get used to that. They were no monsters. Oh, those were not to be confused with monsters, benefactors. We call them Mara-struck.
क्या कर रहे हो? हाँ होप, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। एक्सप्लोर कर रहे हैं, मेरा एक्सप्लोर। हाँ मेरा तो भाई Genshin का शुरू भी नहीं हो पाएगा इवेंट में। क्या? मेरा तो इवेंट भी शुरू नहीं हो पाएगा। कितना बड़ा इवेंट है? बैक टू एकेडमिया मेन हॉल के लिए ये कर देना, बढ़िया। पागल है क्या? आप कर जल्दी ऑन कर बैठ। जितना देर होंकाई खेला था स्टोरी खत्म कर। अरे भैया यार, आपने कहा था अकाउंट भूल जाना, भूल गया हूँ तो यार फिर आप पैसे बुला रहे हो वापस। अरे जमात कर जाओ, क्या? फटाफट कर जल्दी। जितना भी स्टोरी एक्स्ट्रा करना, देखो जितना भी मुझे करना पड़ेगा उतना तो हर 1 घंटे के लिए आपको एक महीना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मैं क्यों करूँगा? ये चीज सब भी डील में थी ही नहीं। मैं तो उल्टा फाइन ले सकता हूँ ये करवाने का, अरे भाई क्या फाइन भाई? क्योंकि ये सब इंक्लूड ही नहीं है। कर देना, कौन ठीक है? करेगा ये सब? पागल है क्या? जल्दी कर देना। अरे वो कर देना भाई, मैं अकाउंट भूल गया हूँ, मेरे पास डिटेल्स भी नहीं है अकाउंट। भूल गया तो ठीक है, मत बोलना फिर। क्या? अकाउंट भूल गया तो मत बोलना फिर। ये क्या बात हो भाई? खुद ने कहा था कि मेंटेनेंस मतलब वही होता है, वापस बुला रहे हो मेरे को? चीटिंग हो ना फिर ये तो। रजन वगैरह ये सब छेड़ना नहीं है बस। अरे भाई वो थोड़ी हो सकता है, वो तो मुश्किल है। वो तेरी गलती है ना फिर। वही चीज तो मैंने क्या होता है इस चीज के लिए रखे थे, उनको नहीं करना। बाकी जो करना है अकॉर्डिंग सब कर। Rules are made to be broken. बैठ पूरा दिन रात तक करके दे ताकि मैं खत्म कर सकूं इवेंट जितना भी हो रखा है। Lend me your strength. कोचिंग जाना मेरे को। करने बैठना कि टाइम की वेस्ट कर रहा है, लग जा। मैं ऑलरेडी कुछ कर रहा हूँ भाई। ओ पता है क्या काम चल रहा है, कितना बंद कर दिए। अरे भाई उस गेम में नहीं यार, मैं आता अलग गेम में तो है ना, जिसमें भी है। गेम में नहीं हूँ। अच्छा कैसे क्या काम कर रहा है? कोडिंग कर रहा हूँ। क्या? कोडिंग कर रहा हूँ, कोडिंग। कोडिंग? हाँ। मैं पहली बता दी लानी चाहिए। क्या नहीं भैया, आप लोग और भाई आप थोड़ी होगा। हेलो, अपनी बात हुई थी। होप हम फालतू की बातें नहीं करते। आजा एमएल खेलते। खेलते बैठ। क्या? आराम से खेल। आप नहीं आ रहे क्या? Are made to be broken. वीकली वाले तो कर रहा हूँ तेरे में, इवेंट का मैं नहीं करूँगा भाई। इतने सारे स्टोरी तो नहीं कर रखे हैं आर्कन पे, सारे इसमें लॉक्ड हो रखे हैं। अपना अकाउंट भूलने की बात मैं कैसे करता है? अरे भाई क्या हो गया? करना कर लेना, नहीं करना तो मत कर। मैं क्या बोलूं? ऐसे फाइन लगेगा आप। हाँ हो, इवेंट करने का फाइन लगेगा आपको। Rules are made to be broken. 2000 रुपए। Lend me your strength. Lend me your strength. ये मैच मिल गया, आवाज आ रही है। हाँ क्लासिक है, रैंक है? सिर्फ प्ले। हो भी बहुत अच्छा वैलोरेंट खेलते होता है। पता है ब्रो, सब ही अच्छा करते हैं ब्रो। नहीं वो भर Why have we stopped? Don't worry, miss. Favor? Count me out. What if मैंने we तो do अभी it शुरू करा wrong हूँ। and you get... I shouldn't have doubted you. Please, accept...
The soldiers stationed here must have moved these पता है into होप के लिए तो बहुत मुश्किल है, होप अलग लेवल पे। I'd like to see us try. They're क्या extremely बोल रहा है? heavy. Even with होप all एंड of us, we wouldn't be able डैमेज to रैंकिंग move क्यों? one. हाँ सेव क्या बोल वेलोन रहा में है? होप डैमेज ऑन डायमंड में Doubting पहुंच your गया। skill, but I'd feel terrible if आप you और hurt कौन? yourself if I'm not mistaken. कौन सा The गेम की बात containers in the कर रहा Trove है? of Verdure can be moved क्या? around using a कौन control से गेम की panel. बात कर रहा है? You've already Valorant. put on quite the show. Do you think you'll be able to find अबे and तक फिर operate the 20 control गेम नहीं हुए, panel? डायमंड को पहुंचा मेरे को Shouldn't be बता ना। simple, right? अरे कैसी बात कर रहे हो? तेरे में तो it. रैंक ही नहीं This खुला will be है, a कहाँ से breeze डायमंड for पहुंचा दिया बे? समझ You रहे? just need to pass through here. Take the barge to ये देखो वो मजाक Starskip कर रहे हैं, वो Haven, डायमंड and डायमंड we'll बैठे be हैं, safe. तेरी एयरटेल बताते नहीं किसी को, स्मार्ट अकाउंट से खेलते Good. ब्रोनिया के से एक्शन फॉरवर्ड बढ़ जाता है, वेल्ड से ही बढ़ता है। हाँ अभिषेक भैया, क्या हुआ? जैसे ब्रोन ने यूज करते हैं तो आपको जल्दी टर्न आती है, और टर्न जल्दी आती है ना अल्टीमेट। नहीं नहीं, वो अपनी टर्न की जगह पर दूसरे कैरेक्टर को टर्न दे देती है और उसका डैमेज बढ़ा देती है कुछ 30-40%। और वेल्ड का भी कुछ ऐसे ही क्या वेल्ड का? मुझे नहीं पता बेल्ट का, मुझे नहीं लगता बेल्ट बेल्ट का ऐसा है। ये बेल्ट लोग का बोलते इतना हैं कि अगर इतना वेल्ड इतना इतना पता है World मुझे कि वो slow एनिमी पड़ता को है। टर्न नहीं लाने देता है, अच्छा, एनिमी को नहीं लोग डिबफ कर वो देता है, पकड़ लेता है। वही बता रहे कि अगर आपके लिए वेल्ट और ये है तो एनिमी की टर्न ही नहीं आती। हाँ तो नहीं आएंगे ना, मतलब वही है ना, क्या कहते हैं, एनिमी एनिमी का टर्न वो खा जाता है, वो एनिमी को बाइंड कर देता है, जैसे एनिमी का टर्न ही नहीं आ पाता। वही पूछ रहा था। अभी क्या होंगे खेल पे क्या? कितनी स्टोरी पहुंच गई? दूसरे प्लेनेट पे आ गया हूँ मैं। वो कौन सा जेरिलो जेरिलो के आगे दूसरा है वो? हाँ वो चाइनीज वाला ना। Let's make it quick. Lend me your strength. ये क्या है यार? वो कुछ तो है। मैच स्टार्ट नहीं हो रहा। सपरी गेम है प्रो, ये सपरी गेम। तुम्हारा टूर्नामेंट जीतेगा तो ये अगले महीने का आएगा तेरा। अरे क्या हुआ, कल टूर्नामेंट है ना? हाँ रेजोल्यूशन से आपका आईजीएन सीईपी है ना स्मॉल में? हाँ कैपिटल में सी है, कैपिटल में सी है, बाकी स्मॉल ही स्मॉल नहीं नहीं नहीं, मेरा सी अलग है थोड़ा, तो मेरा कॉपी कर लो। वो मतलब नहीं होता। आपको भेज दिया है कोई, जो होगा देखा जाएगा। भेज दिया भाई। जो होगा देखा जाएगा। कोई बोलेगा तो बोल देंगे ये उसको बोलने का वो व्हाट्सएप पे कॉपी नहीं हुआ बराबर से शायद। नहीं क्या हुआ मतलब ये आईजीएन 3 लीटर में नहीं एक्सेप्ट कर रहा था एमएलबी भी, तो मैंने सी को कुछ दूसरा ऐसा किया कि वो 2 कैरेक्टर की जगह ले, तो नहीं अब तो ये भी होगा। नहीं चलेगा ब्रो। बोल मतलब देंगे नॉर्मल सी, वो नॉर्मल सी जैसा ही दिखता है, बट सिर्फ 2 कैरेक्टर की जगह लेता है। तो नहीं सेव कोई कुछ बोले तो बोल देना सेव 2.0 हो, ठीक है? हाँ। अरे होप अकाउंट चिपका देते यार, होप अकाउंट में स्किन भी है ना होप? अच्छी खासी स्किन लेके बैठे हैं होप तो, पैसे वाले आदमी। मैं बोल रहा हूँ टूर्नामेंट कौन है टूर्नामेंट में? मतलब बीटी है, सोमा है, बीटी है, अभी सोमा तो है, अगले महीने का क्या बोलते हो निकलेगा? क्या जीत गया तो अगले महीने का फ्री मेंटेनेंस वाला आएगा तभी पैसे। अरे हाँ 3000। अरे मैं भी क्या बताओ, हम 6 तो लोग हैं। तो तू जान 300 रुपए में अगले महीने का कर रहे हो तो बताओ। 300 नहीं 500 रुपए, 500 रुपए अगले महीने कर लो तो बताओ। तू भूल गया मैंने क्या बोला था? कौन? लुंगा नीवा मतलब
आज इसे एकदम एक्सट्रीम चीज ज्यादा चार्ज करूंगा। This is नहीं our 500 रुपये में कर लो, बताओ क्या दिक्कत है? Lend me your strength. बहुत वो पैसे की कीमत जानो हो। अभी तो बोल रहा हूँ। We shall take back what we lost. मैं तो जानना नहीं हूँ, तो मैं बोल तो जानना हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ। जो मतलब 4 गुना ज्यादा लेना जितना तुम नॉर्मल से लेते हो। वही वही। भाई मैं तो उल्टा भाई रेगुलर कस्टमर हूँ, मैं तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। नहीं नहीं, वो डिस्काउंट नहीं चाहिए, सिर्फ न्यू कस्टमर्स को मिलता है, तुमको पता नहीं है? स्टार्टिंग में मिलता है बस। स्टार्टिंग में क्या भाई? हेलो स्टार्टिंग का मिल चुका है पूरे। एक लौता यही है सबसे कम मंथली मेंटेनेंस वाला। कौन भाई कम? मैंने बड़ा पैक लिया शुरू में, सबसे बड़ा तो मैंने ही लिया। मेरे काट रहे हो तेरा, ये कैसी बात हुई? है चमक बड़ा पे? हाँ चमक सबने देखा है बड़े बड़े। उसको एक साथ बंडल में लेना बोलते, बड़ा पैक कैसे हो गया? बंडल? अरे बंडल बड़ा पैक यही। अरे यार भी क्या कैसी बात कर, कैसी बात कर? और उसको तो एक सीख मिल गई ना कि कभी बंडल में लेना ही नहीं। हेलो सेब। हाँ बोलो ब्रो। एमएल अभी देखो एक 15 मिनट में। ओ हेलो एमएल वाले, हेलो। Leave it to me. चोरी कर लेना, फिर मत बोलना बताया नहीं। आप तो आ जाओ एमएल। अब आप तो आ जाओ। हाँ? आप नहीं आ रहे क्या? अपने काम पर लगा हूँ। We've entered the storm. To guard and तेरे तो defend. करने हैं ना वीकली पूरे निपटाने के लिए। Rules are made to be मैं broken. छोड़ दूंगा। छोड़ दो, काम करो, मैं देख लूंगा अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, Stay alert. खाली फिर अलग हल्ला होगा। नहीं देखो मैं आपको बताता हूँ, वो उससे चार्ज चला जाएगा अगर एक वीक देखने। यही मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे चीजें नहीं, तेरा सरदर्दी। अरे सुनो तो। हाँ। हाँ आपको सिर्फ चीची और तिगनारी टाइम टेबल का। You have my gratitude. हाँ हो। अरे बिल्कुल नहीं, एक्स्ट्रा काम मेरे को। अरे कौन सा एक्स्ट्रा काम? क्या बोले? चीची 90 लेवल। हाँ हाँ, और उसका फ्लावर बहुत जल्दी मिलता है ना? नहीं फ्लावर तो है, फ्लावर की दिक्कत ये कौन है? हाँ 36 फ्लावर है। आप समझे नहीं, कौन सा फ्लावर? कौन सा फ्लावर? वायलेट यार। आप तो अभी जाओ जल्दी से वहाँ से इंफार्मली से क्लेम करो। हर 10 दिन में 100 हो गया फ्री, है कि नहीं? जब तक आप आओगे तब तक तो भाई वो तो क्यों पास Lend me your strength. है कि नहीं? Let's go. देखो जाओ वहाँ पे, जाओ वहाँ पे बुक फार्मेसी। अच्छा, और ये नीलो कोलेटरल लूटर कितने यार मिलते कुछ हैं? तो करना पड़ेगा ना आपको यार, हर चीज फ्री में। नहीं कितने मिलते हैं एक बार? अब हर चीज थोड़ी फ्री में जाती है यार, आप कैसी बात कर रहे हो? आगे ना करना पड़ेगा। This ends here. हमेशा हर चीज का कैच रहता है जवा। In the name of Landa, अबे ऐसा कैसे था? हम तो ना कैच लेते हैं, हम तो वही प्लेयर प्ले वाले प्लेयर। हाँ पता है, जो दो कैरेक्टर्स इसमें बोले इनका फ्लावर ऐसी ऐसी जगहों में है और इतना कम मिलता है वहाँ पे, दिमाग खराब हो जाएगा। गलत समझ रहे हो आप, क्या कहाँ है तो से हाँ जी जल्दी 35 लेवल पहुंचना यार, तो 10 विश मिलेंगे। कैरेक्टर चाहिए 5 स्टार यार। हेलो समझ लाइक ब्रो। जेपर्डी शील्डर है क्या? हाँ जेपर्डी शील्डर है, ओपी शील्डर है। देखो जपार्ड शील्डर है, क्लारा शील्डर है Difficult start, but और things got easier. फायर एमसी भी शील्डर है। Don't fret. All कोई डीपीएस Amacasters है know भी their way जिन around a ये जो Starskiff. स्टैंडर्ड में कैरेक्टर है। क्या पता? देखो जपार्ड डीपीएस है क्या? नहीं जपार्ड कहाँ डीपीएस, तो शील्डर है। बाइलू सपोर्ट है। क्लारा भी टैंक है। बाइलू हीलर है और वो बफर है, क्या नाम है? ब्रोन्या। ब्रोन्या बफर है। वेल्ड सपोर्ट डीपीएस है। हिमिको तो मैं मतलब क्या सपोर्ट डीपीएस नहीं हिमिको डीपीएस है। से बस डैमेज उसका बेसिक्स का डैमेज, ओनली अल्टीमेट और स्किल का डैमेज। तो डीपीएस मान लेते हैं। तो और किस चीज का डैमेज होता है भाई? 3 ही तो टोटल स्किल है, 3 में से 2 में अगर उसका डैमेज में आ रहा है तो उसमें क्या है, क्या होता है? वैसे अल्टीमेट का डैमेज गलत बोला।
हाँ तो और उसके बाद फिर ये बचा, क्या नाम है, वॉल्ट, ये वेल्ट केन, वो भी सपोर्ट ही है, सपोर्ट डीपीएस। बेल्ट तो बोल ही चुके हो, कितनी बार बोलोगे? 2 बार। एक बार काम आता है। 13 ने जपर्ड कौन सा टीम में रखे हैं? अगर जपर्ड है तो जपर्ड रख लो। मार्च 13 तो मतलब 4 स्टार है, वो 4 स्टार क्या कहते हैं, 4 स्टार शील्डर है। और ये जपर्ड 5 स्टार शील्डर, इसकी शील्ड अल्टीमेट में सबको मिलती है और इसका डैमेज भी काफी ज्यादा आता है। आपके दोस्त को पूरी अल्टीमेट दुनिया में मिल डैमेज गई। नहीं देता है, बाकी स्किल और इस तरह का डैमेज इसका ज्यादा आता है, काफी ज्यादा। ओ भाई मिस्ट किलर को क्या हो गया? फिर क्लारा ही, अभी क्लारा ही मिल गई। On behalf of the Skyfaring Commission, allow ऑलरेडी me 5 to स्टार है। welcome you to थोड़ा लग यहाँ भी दो Starscape भाई, ये थोड़ी कि Haven पनौती on भेज the रहे हो आप, Cienjola और वहाँ से Food. लग भेज रहे हो। Anything relating to aviation, navigation, and trade आओ। falls within the scope of the Skyfaring Commission, which is one of the 6 commissions of the law. क्लारा मैंने खेला नहीं है, As the biggest मैं port बता on नहीं the ship, सकता। Starscape क्लारा Haven अपना is governed टैंक by वो the है, Skyfaring उसकी Commission अल्टीमेट क्या करती अगर है देखो, जब भी। अगर शील्डर तुम्हारे में जैसे जेपर्ड है, अगर क्लारा का भी सेम काम है तो फिर उसको मत रखो। चाहो तो देखो नहीं एक वैसा नहीं है, एक हीलर रख लो, ठीक है ना, एक शील्डर रख लो, बाकी डीपीएस एक रख लो, और बाकी एक तुम्हारा जो मन चाहे, मेरे ख्याल से बफर रख लो या फिर डी बफर रख लो। क्लारा शील्डर नहीं है, क्लारा आप समझ लो डीपीएस भी है, लेकिन वो तब डीपीएस देती है अगर एनिमी आपको अटैक करेगा तो वो काउंटर अटैक करती है उसी टाइम। क्या मतलब किसको काउंटर अटैक, मतलब कि किसको अटैक करेगा तो काउंटर अटैक करेगी? जब आप अल्टीमेट मारोगे तो उसका वो नहीं है, आपके आगे पीछे एक रोबोट आ जाता है, रोबोट। मुझे नहीं पता भाई, मैंने नहीं वो खेला है उससे। नहीं बता रहा हूँ, आप पीछे एक रोबोट आ जाता है, वो क्या करता है जब भी आपको अटैक पड़ेगा तो डैमेज रिडक्शन, आपको डैमेज रिडक्शन मिलता है, और वो उसको और उसी एनिमी को फिर से अटैक करता है वो। अच्छा खासा डैमेज जाता है। तो फिर सही है, उसको डाल लो और क्या। मतलब ऐसा टैंक है तो उसका ऐसा डैमेज नहीं है, जब उसको पड़ेगा तब वो डैमेज दे पाएंगे। You definitely sound like a what was it again? Oh, Hammy Cassidy. By which I mean nice speak. That's too kind of you. क्या ग्लिच आ रखा है My भाई? job involves ferrying business delegates to and from Starscape Haven, so I कितने do सेव हो गया this अभी kind फिर? of introduction all the time. मेरी विशेष? हाँ। किधर? गेंशिन में या स्टार रेल में? स्टार रेल सेव नहीं कर रहे हैं शायद आप? नहीं, स्टार रेल में कर रहा हूँ ना, उसमें से क्या करना है? Anyway, we're safe now. Normally I'd be a good host and take you around, but these are difficult times. Let's head to the Palace of Astrum first वीकली विजिट में देख लो क्या क्या है करके। Palace of Astrum? बार स्टार्टिंग में चला जा रहा है अपने आप। Right there, the tallest building in the city. It's also the headquarters of the Skyfaring Commission. यार Let's जॉन hurry. विक We देखता नहीं haven't got much कोई। time. हाँ। सेब। हाँ बोलो। जॉन विक देखी है? हाँ देखी तो है। Don't mean to rush पसंद है कि you, ऐसे ही but बस if Madame मिले Yukong जैसे, holds क्या me मतलब? accountable for not getting you over soon enough, I wouldn't want to be around for the अरे भाई वर्ल्ड consequences. 3 नहीं हो रहा मेरे यहाँ Scary. पे, वर्ल्ड 3 का You वाला said she was kind-hearted. We need to make a few preparations before paying a visit to any of the 6 commissions. Rest assured, Miss Tingyun, we won't go anywhere. If you can inform Madame Yukong of our arrival first, we'll meet you at the palace entrance later. अपॉइंट बन गए आप। Very well. है ना हो? क्या बोलना? होता आप अपॉइंट बन गए आपको नहीं। Little Miss Fox moves at quite the pace. I can't keep up with her. ऐड कर I लेना। spent too long on the bench. तुमने रिक्वेस्ट सेंड किया क्या? Let's catch our breath for a while, huh? We can expect a packed schedule. Not so fast. वो ऐसा एक्ट नहीं कभी शुरू में जो हील भी करे शील्ड भी दे। मुझे नहीं Our लगता। meeting with Madame Yukong won't be. अभी शायद नहीं है, without ऐसा भी कह रहा था। We need to be prepared and take it serious. She is a top Xianzhou leader. Oh, Mr. Yang, do you think this could be Bellabog all over again? क्वेरी दिया अभी सेंड कर दो भाई। हाँ रुक जाओ, ये क्या नाम है, डायलॉग्स खत्म हो। No, the Xianzhou Alliance is better than that.
But Madame Yukong will definitely have a string of difficult questions. Why did we choose to come to the Oh, Xianzhou now? wait कर रहे हैं मैं और से How आपकी did lobby we में. know that the incident is related to a Stellaron? क्या? Careless answers mean मैं hope को बोल रहा हूँ distrust and potential hostility, which would make things much harder for us. Huh, crud. One of us is gonna blurt तुमने something आईडी दिया, out तुमने or अगर आईडी get दिया तो something मेरे में कोई wrong. I मैसेज just नहीं know आया। it. शायद तुम्हारा मैसेज आ नहीं रहा होगा। नहीं, मेरा मैसेज नहीं आया। अगर तुमने आईडी दिया है तो मेरे में वैसा कोई मैसेज नहीं आया। नहीं, आईडी नहीं दिख रही। अगर तुमने आईडी का मैसेज कोई किया है सेंड तो मेरे में नहीं दिख रहा। कॉमा करके डाल दो या फिर डैश करके डाल दो। मैं अनहाइड कर दूं आईडी वाला मैसेज? मेरे में मैसेज ही नहीं आया, मैं कैसे अनहाइड कर दूं? हाँ ठीक है, अब दिखा मैसेज। तुमने जो बाद में कॉमा करके किया। Good idea. We can be his cheerleaders in the back. Let's not... Don't worry. Well... हो गया। मैं स्टार्ट ही नहीं हो रहा यार। कौन वो है वुडन पीसी? तो वुडन पीसी है कोई? क्या? किसी का वुडन पीसी है क्या? वुडन लो गेम स्टार्ट नहीं हो रहा। वुडन? अरे मतलब गेम मिल ही नहीं रहा भाई। अच्छा मिल नहीं रहा। उन्होंने कि लोडिंग स्क्रीन पे बैठ के स्टार्ट नहीं होता। नहीं नहीं नहीं। ओह नाइस नाइस। ये सोमा तेरा यार कितना हुआ? 32 हो गया? सही है। हाँ। मेरा तो अभी 29 पर ही है। मेरा हो जाएगा बोलते हैं 35 हो जा। वही बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, मैं तो अभी बचा के रखे हैं तो करेंगे अभी। मैं डेली भी करना है आज का मुझे। थोड़ा सा बाद में करता हूँ, डेली कर लेता हूँ आधा करेगा। आर्टिफैक्ट्स फार्म करने पड़ेंगे यार पहले ही, वरना आर्टिफैक्ट अपग्रेड ही नहीं हो पाएंगे अपने वो 3 स्टार 4 स्टार वाले। बड़े दुख हैं भाई। अपग्रेड करने मुश्किल है भाई, वो मल्टी फॉर्डर ही नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो फार्म ही करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि जब तक मुझे फैशन नहीं मिलेगा तब तक मैं फार्म नहीं करूँगा, लेकिन कुछ वो मिल ही नहीं रहा भाई कहीं से। और छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, एक अपग्रेड को थोड़ा सा बस खत्म हो जाता है। आर्टिफैक्ट कहाँ से मिलते हैं? आर्टिफैक्ट के लिए डोमेन्स हैं, देखो जैसे ये देखो यहाँ पे डोमेन्स हैं। ये देखो ये वाली। हमारा AR कितना है अभी? AR मैंने देखा नहीं, मैं भूल गया देखना। देखो ये सारे डोमेन्स हैं उसके लिए, आर्टिफैक्ट के लिए।
स्टोरी से खुलेगा, हाँ स्टोरी से नहीं खुलेगा, थोड़ा सा तुम्हें करना पड़ेगा कि कहाँ पर हो तुम अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाओगे तो थोड़ा मेरे ख्याल शायद एआर तुम्हारा ज़्यादा रहेगा तब शायद खुलता है। ये समय कहाँ से खुलता है ये आर्टिफैक्ट, मतलब कौन से एआर से खुलना शुरू होता है? आईडी 15 के बाद ही खुलता है। मेनली खुलता है शायद 20 के ऊपर पहुंचा, 20 के ऊपर तक। अब मुझे याद नहीं है कब खुला था, लेवल 20 है अभी। तो पता नहीं, देखो तुम इसमें देखो ये यहाँ पे जो रहता है ना, यहाँ पे खोलो, फिर ये सबसे लास्ट में जो सर्वाइवल इंडेक्स में यहाँ पे देखो ये तुम्हारा रहता है कैवर्न ऑफ कोरोजन में रहता है शायद, हाँ कैवर्न ऑफ कोरोजन है। यहाँ पे देखो तुम्हारा रेलिक्स जो नाम से रहता है, यहाँ तो तुम्हें दिखा देता है ये। अब मुझे याद नहीं है कहाँ से खुला था, मतलब कब खुला था। इधर हो ब्रो। तो अब जिंदा ही नहीं है। 67 की पीटी हो गई, फिर भी कोई 5 स्टार नहीं मिला अभी तक। इसमें उसमें कैरेक्टर में परमानेंट और परमानेंट में तो मुझे भाई 2 5 स्टार मिल गए, एक 5 पीटी पे और एक कुछ 30-20 पीटी पे। भाई 67 की हो गई यार कुछ यार 67 हो गया तो भी कुछ नहीं। अब तो वैसे उम्मीद नहीं है मुझे कोई और दूसरा 5 स्टार मिलने की भाई उसमें से परमानेंट से 90 से पहले। मुझे असेंशन क्वेस्ट करूंगा फिर होगा, हाँ असेंशन क्वेस्ट कर लो, हो सकता है वैसे असेंशन क्वेस्ट करो तभी है। Let's make it करना पड़ेगा इसे। Lend me your strength. अरे भाई क्या बताएं। चलो हो गया ये 500 पॉइंट्स। या तो एक शील्ड मिल जाए या एक हीलर मिल जाए, दोनों ही अच्छा रहेगा। दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा जो वही तो चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए। और बस हीलर कौन कौन सा है? वो है नहीं है बैलू है कि नहीं है? 5 स्टार में कोई हीलर नहीं मेरे। ओह कौन कौन से 5 स्टार है तुम्हारे पास वैसे? सीली और हिमिको। सीली और हिमिको। ओह दोनों तो डीपीएस ही हैं। हाँ सैड है फिर, और क्या तुम्हारा? वही तो दिक्कत है, डीपीएस ही है बस। वो बड़े प्लेयर बन गए यार। वही चमा। हाँ हो मेरे आने तक वो क्या बोलते हैं स्टोरीज खत्म कर लेना। आने तक मतलब क्या अभी 1 घंटे में? नहीं कौन सा? अच्छा 15 दिन का है ना? हाँ 15 दिन का है। देखो वेडनेसडे थर्सडे मेरा ऑफ है, तब कर लूंगा मैं डायरेक्ट। 2 दिन का ऑफ है कोचिंग का। 2 दिन में तो हो जाएगा ना, कि 2 दिन में भी नहीं होगा? नहीं हो पाएगा। पीछे से कौन आया है भाई? मुझे क्या पता, तुमने तो बहुत सारे नहीं किए, देख लेना। थोड़ा अप्रॉक्स लगा ना, आपने तो करके वीकली वर्सेस मार दिया तुमने, सोमा की नहीं मारा? एक दिन काफी है क्या? वीकली मैंने 1 मार दिया, मैं फिलहाल धीरे-धीरे मार रहा हूं। 3 मार सकते हैं टोटल। वो मैं देख रहा हूं, इसको और मारूंगा, कल मारूंगा 1-2। एक तो मैं जो बोल रहा था ना, बारिश अभी तक उठाई हुई थी क्या बारिश? नहीं बारिश हो गई। अरे वो मेरे बुआ के घर के साइड में शायद लाइटिंग ज़्यादा गिरी थी, उनका कल टीवी किया, आग लग गई उसमें, बहुतों का पंखा जल गया, इन्वर्टर फूट गए बाहर जो हो यहाँ पे हो बारिश। कल सुबह सो के उठा ना, सो रहा था, इतनी भयानक बिजली गिरी, आंखें खुली बगल में घर की तरफ, ऐसा लगा बम फूटा ऐसी आवाज। खतरनाक बारिश हो रही है भाई। उसका जो विवाह के घर में सामान आ रहा था, तो पुराने जहाँ यूनिट में काम कर रहे थे वहाँ से सामान रख के आए थे पूरा हाथी में। तो हेल्प के लिए गए थे हम लोग। जैसे पहुँचे दरवाजा खोला अंदर से, कभी की आवाज आई कि ये तो पीछे से धुआं।
The stellar जबकि लाइट changes चाहिए everything. Lend me your strength. लाइटिंग आगे तो हाल है ये ना कहीं पर पूरा बोल के तो आ गया है ऐड तो साला फ्रोज वो तीन वाटर से कनेक्टर था कि पहले इन्वर्टर फूट जाता क्या बढ़िया बात भाई ये दो एक तो भाई पहली बार देख रहा हूँ मैं कि अप्रैल में बारिश होगी Is that all? Lend me your strength. उसके बाद सबसे सारे मॉडल ये ग्लोबल वार्मिंग चला Are made to be broken. अरे यार ये केवल इस फाइट में बहुत ज्यादा आवाज है भाई मैं कम करता हूँ फिर भी उतनी ही रहती है समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम है क्या उनका रिपोर्ट ही था देखो ऑलरेडी ऑडियो 2 पर है मैं क्या करूं इसको भाई 0 पे हाँ तो ग्लोबल वार्मिंग इररिप्लेसेबल हो जाएगी और साउंड इफेक्ट्स मैंने ऑलरेडी कम कर म्यूजिक कर देता हूं मैं ज्यादा ठीक रहेगा तो ऐसा लगता नहीं कुछ करने वाले वही बोल रहा हूँ ना मैं 7 साल तो कुछ नहीं किया था ग्लोबल वार्मिंग इररिप्लेसेबल हो जाएगी वही बोल रहा हूँ कुछ और बोल रहा वही वही नहीं मुझे लगता कुछ होने वाला Never falters. क्या लगता है कुछ होगा जल्दी मर जाएंगे Lend me your strength. क्या करोगे मर के आहो क्या रखा है मरने में Lend me your strength. क्या रखा है लाइफ टाइम की शान मालूम जब आपको उठा के बड़ी डाल दी यहाँ बता गया फिर ज़्यादा ही शिकायत देख रहा है वो पॉसिबिलिटी तो है किसने देखी है लाइक Lend me your strength. आई होप Rules are made to be broken. तब की तब देखी जाएगी देखा है A will forged in ice. Never falters. भाई वर्ल्ड 3 हो जाए वर्ल्ड 3 में दिमाग खराब हो To guard and defend. Crush them. कौन से आ जाए Is that all? Lend me your strength. Rules are made to be broken. Power translates into hope. Lend me your strength. A will forged in ice. Never falters. Power translates into hope. Rules are made to be broken. To guard and defend. Crush them. Engulf the past. Lend me your strength. Power translates into hope. What's in your prescription? A will forged in ice. Never falters. The only redemption. Lend me your strength. Engulf the past. Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. Rules are made to be broken. Deceived me. We made a choice, go fight against your fate.